very soon. The subject of this, practically the last session of the whole celebration, is sadhana according to the Holy Trio. We have with us Revered Swami Gautamanji Maharaj, who will give the benediction, and speakers consist of Revered Swami Balabhadranji Maharaj, Revered Swami Vishwatmanji Maharaj, and Revered Swami Nityasthanji Maharaj. We are waiting for the arrival of Revered Vice President Maharaj. In the morning, Maharaj was busy. More than 40 devotees were initiated to Mantra Diksha. So as soon as Maharaj comes, we shall begin the program. We are beginning the program. We request Revered Balabhadranji Maharaj, Revered Swami Vishwatmanji Maharaj, and Revered Swami Nityasthanji Maharaj to come over to the stage.
we begin the program by opening song by Swami Vivekananda ji. My pranams. This is a bhajan written by Swami Brahmananda long back, which depicts the true spirit of spiritual sadhana, which we find properly amplified and systematized in Thakur Mas Swamiji. It contains the same ideology and philosophy. ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णां जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जन्म सफल हो जाए, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो, तुम्हारो चेतन देव की सेवा करो नर, चेतन देव की सेवा, चेतन देव की सेवा करो, चेतन देव की सेवा करो, चेतन देव की सेवा करो नर रे, चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो, चेतन देव की सेवा करो नर, चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो, चेतन देव की सेवा करो। घट
घट पूरण एक निरंजन घट घट पूरण एक निरंजन घट घट पूरण एक निरंजन द्वैत भाव सब दूर निवारो द्वैत भाव सब दूर निवारो चेतन देव की सेवा करो नर चेतन देव की सेवा करो नर चेतन चेतन देव के सेवा करो। हिरद अंदर मंदिर माही हिरद अंदर मंदिर माही जगमग जोत जगे उजियारो जगमग जोत जगे उजियारो जगमग जोत जगे उजियारो चेतन देव की दे सेवा करो नर चेतन देव की सेवा करो नर जन्म सफल हो जाए जन्म सफल हो जाए। प्रेम पुष्प से पूजन कीजे 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 मन दीपक धर ध्यान विचारो प्रेम पुष्प से पूजन कीजे मन दीपक धर ध्यान 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 विचारो ध्यान विचारो ध्यान विचारो। ब्रह्मानंद उलट सुरति को ब्रह्मानंद उलट सुरति को ब्रह्मानंद उलट सुरति को उलट सुरति को कर दर्शन भव बंधन टारो कर दर्शन भव बंधन टारो कर दर्शन भव बंधन
तारो भवबंधन तारो तारो चेतन देव की चेतन देव की सेवा करो नर जन्म सफल हो जाए तुम्हारो जन्म सफल हो जाए चेतन देव की सेवा करो नर चेतन देव की सेवा करो नर चेतन देव की सेवा करो नर सेवा करो नर सेवा करो नर Yes. A small point of information or clarification. Before singing the bhajan, Swami Kripakaranji referred to a song which he is going to sing, we just heard it, by Swami Brahmananda. This Brahmanandaji Maharaj is not from the Ramakrishna order. This Brahmanandaji was from Rajasthan. Not any authentic biography is not available. Lot of information about him is available on the internet. Just to make it clear. Now we request Swami Shantatmanji Maharaj to give welcome address. ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपादितविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। यथाग्ने दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहं। परतत्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। Most revered Srimad Swami Gautamanji Maharaj, Vice President Ramakrishna Math Ramakrishna Mission, Swami Balabhadrananji, revered Swami Vishwatmananji, revered Swami Nityasthananji, other revered monks present here, my humble pranams to all of you, my namaskars to all the devotees. It has been 3 days of overwhelming experience for all of us. Everywhere we could only hear the view that it has been wonderful, it has been nice, it has been joyous, so nice. And it's all most revered Maharaj's blessings. He laid the foundation stone for this project 3 years ago on the same day, that is Jagadhatri Puja Day. And 3 years later, he has come to inaugurate it. Imagine, he has presided over every session at 93 plus years. And morning also he would have come, but he was busy in the temple with Diksha. Otherwise he would have been here in the morning session also. So we are deeply, deeply grateful to him, and we can never in any way express our feeling of
gratitude. Only we can offer again and again our humble pranams at his holy feet. It has always been the tradition of Delhi Center the last 15-16 years. For all our Bhakta Sammelis, etc., we select a topic which is very relevant and very useful to devotees. And accordingly, in our own humble way, try to select the speakers also. So we thought that, amidst such huge, the show of activity and people running around and all that, we should really go back to our own self and then really reflect. So I thought that concluding session should be on sadhana. So in our own humble opinion, we invited those sadhus who are really known as kind of sadhana oriented. There are many other sadhus, but they are also speakers that way. So that is why the choice of Vishwatmananji, Balabhadranji and also Nityasananji. It was a difficult decision because there are so many Swamis are available to speak, but we have only 3 sessions. I never wanted any session to go beyond 2 hours. Even 2 hours is too much. And then far beyond normal human attention span. So that is why we had to restrict the number of speakers. And today, very fittingly, the concluding day, we are going to have perhaps one of the most important sessions of these 3 days deliberations. Because every parampara, every tradition, every great order has certain hallmarks, certain distinguishing features. You find that some of the much newer movements are really far ahead of us in terms of activities, in terms of their dependence on technology, the way they use the social media, etc. So these are all not our specialities at all. The real distinguishing feature, the real hallmark of the Ramakrishna tradition is sadhana. If you really look at the lives of Sri Ramakrishna, Holy Mother and Swamiji, direct disciples, even the next generation of sadhus also, the one thing that has been greatly emphasized and lived and shown to others to emulate is this intense sadhana. If Sri Ramakrishna's life is to be summed up in just one word, it's sadhana and sadhana alone, nothing else. Holy Mother, of course, he showed one aspect, one way of living deeply immersed in sadhana. That is not only practicing, but day and night living only in that ambience, talking only about that, inspiring people to dive deep into sadhana. That was his. He never ever gave any lecture or got into any platform or anything like that. Sadhana, either deep meditation, samadhi, or extraordinary singing, uplifting the minds of all those who had gathered at Dakshineshwar at that time, or Balramadi, wherever he would go. Within a short time, the topic would turn into something deeply spiritual. Even when he went to meet absolutely unknown people like either Vidyashankar or many others, if you see that, if you read Kathamrita, every second or third page, you will be taken deep into depths of sadhana. So that has been Sri Ramakrishna's life, message. Holy Mother, of course, she showed a totally different aspect of life because she seemed to be 100 times more busy than all of us, because from her day would start at 3 and would end at 11 with hardly probably an hour's break in between, doing every kind of what are even called menial work, so to say. Cooking, cleaning, washing vessels, these, entertaining devotees, feeding them. And in and through all that, she used to do 1,00,000 japa every day, 1,00,000 japa every day. That means, even faster than our heartbeat. Because that means, even more than 24 into 60 into 60, more than that. Probably, really maybe a state of ajapa or whatever it is, where, it was unbroken japa. So every now and then people would get a glimpse of it because someone would trigger something, some incident would occur, something, then there will be a kind of a cloud burst like her inclination to sadhana, her realizations, where her mind really was, all that would be revealed in that split second, in that few moments of extraordinary, the spurt or burst of her realizations. Again, she would, of course, conceal herself
withdraw back into all that. So it's all nothing. She would try to, put away people, try to disown all that. Several times, she was caught deeply immersed in samadhi. She would never accept, nothing like that. So that was Holy Mother. Swamiji, of course, he set into motion this huge, this the yajna of karma, so to say, where we are all busy working. But before that, it was a great concession coming down by Swamiji. Because, he was a dhyana siddhas, Thakur used to say. And Thakur asked him, what do you want? He said, I want to remain absorbed in samadhi. Come down once in a way to have a morsel of food to sustain this body, to live just like that, and again dive into samadhi. That was his nature. So during his entire wandering days, if you see how deeply immersed he was in sadhana. Of course, then, he came in his vision in Kanyakumari and direct disciples, Turiyananji, Brahmananji, many others. Years, someone asked Brahmananji, why do you do so much? Thakur has given you everything. Yes, he has given us everything. To make it our own, we are doing sadhana. Everyone went to that extent that we will not beg for food. Let us see, Sri Ramakrishna, does he really love us and arrange for that? 2 days, 3 days. Then some unknown person says, today is Dwadasi, before breaking fast, I got a vision. 2 Swamis are coming after bath, you first feed them. Oh, then they were very happy. Thakur is with us. So, that was Brahmanaji. It was very difficult for him to come for meeting. By the time, the board of trustees, etc. had all been set up. But it was impossible to make him come on a regular basis for this, that and all. Suddenly he would not come. No one would dare even go near him and ask him and call him, it is time for meeting, you come, or things like that. Taking signature. Because every now and then he would deeply get immersed in samadhi or that kind of bhava, etc. All the direct disciples exemplified this character in their life to an extraordinary fashion. Actually, that it was when Yogananji, when he protested, when Swamiji wanted to start the mission and activities and all that, he said, "Kahan se tum le aaya? Thakur to nahi bataya hum log ko." See, there was a valid reason for Yogananji to protest. Swamiji started it for very ordinary mortals like us. But Yoganji and others who had already experienced the highest idea of samadhi, for them it was a great concession to come down from that level and participate in activities. So obviously he protested. There's nothing wrong. Because, Swamiji was, his vision for 1500 years, how the movement would grow, how it spread, how it really inspire people. Yes, obviously, he was a Yogapurusha, extraordinary. He was one of the Saptarshishis, and then some says he was Shiva Avatara, and so many incidents about all that in his life. So Swamiji had a huge vision for mankind. But some of the others who were really not understanding at that time, or they were really disagreeing with him, because they had a very valid reason. They had already experienced the highest by the grace of Sri Ramakrishna by sitting under his feet. Obviously, they wanted to spend the rest of their life that way. So they thought that this was moving away. So there was a reason. So everyone, even in the next generation, Virajananji, many others, they were known for their intense sadhana. One incident from Virajananji's life, one of his disciples, she's 87 or 88, she's in the audience today. In Maharaj, even after he became the president, he would live, with that condition only agreed that he would continue to live at least 6 months or so in Shamlatal, and then only other 6 months in Belur. They had to agree, otherwise he said, I don't want to be the president. Because Shamlatal, he had built it brick by brick by himself. So, his sevak, normally I think early morning 3:30 or so, they used to give him bed tea. One day morning he goes, he finds Maharaj deeply absorbed. He did not dare disturb him. He came away. Then as usual our ashramas, this early breakfast, 7 o'clock or so, the breakfast bell rang. He went and saw, Maharaj was exactly like that. 12 o'clock, noon time, lunch time, he went and saw, again Maharaj was exactly like that. 3:30, tea time, again.
After 7 o'clock or so, Maharaj opened his eyes and says, Koi, tumra to amake cha davni? You did not give me tea? Maharaj, Sandhya. Are rakho tomader shakal se. Keep your morning and evening. Last night, I was closing the windows. मान लीजिए क्या होगा 9:30 होगा. I was closing the windows. विद्युत चमक रहा था. It was lightning and it was pouring the rain. बस बैठ गया. So morning at that age, from night 10 to evening 7 o'clock. Imagine, this is our tradition. This is our treasure. This is our wealth. Intense activity, service to the mankind, everything so important, so necessary. They are all part of our spiritual disciplines. Otherwise we cannot grow. But it's also necessary. Unless this is stressed, unless we keep up this tradition, we will be nowhere. We cannot compete with many of the other organizations because they're all managed by very highly qualified, technically qualified professionals and others. But our strength, our specialty lies in this intense sadhana. So I think all of us as monastics, as also as devotees belonging to this great tradition, this great monastic order, we should again and again emphasize, stress, whatever it is. You know, even a person like, imagine, a person like Madhavanandaji, Holy Mother's disciple. In the trustee meetings, it seems when he was there as a General Secretary, he was the only person who would speak. In half an hour, all agenda will be over because he had everything he has seen through and no one would have anything even to say. He was so sharp, so brilliant. Suddenly something he said, something like that. I heard, I hope I'm right, Virjan said, Nirmal, tapasya kora dorkar. Immediately he took leave from the General Secretary's post and probably some 2 years or so, he did intense tapasya. Not that he was not doing, he was all so particular about his japa, meditation, everything. But then, the order was growing, he was managing all the activities along with that. But somehow the President of the felt that he should even dive deeper into sadhana. So that has been our strength, that has been our speciality, that has been our USP, that is what unique to us. I think it is the duty of the entire fraternity. The Ramakrishna Parampara, the Ramakrishna Parivar, Thakur's family, Ma's family, Swamiji's family, all of us should work together to strengthen this, as otherwise this is the source, this is our sustenance, this is our inspiration which would lead us to the kind of intense seva-oriented activities or service of mankind. So I humbly request all of us, including myself, we should all intensify this aspect of life, so that that tradition continues unabated. We do not deviate from that and lose our extraordinary uniqueness, which is a gift from Thakurma and Swamiji and also the direct disciples. Pranam. We now request Revered Swami Nityasthanji Maharaj, Adhyaksh Ramakrishna Math, Baswangudi, Bangalore, to speak on the subject. ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। Most revered Srimad Swami Gautamānanda Maharaj, revered Vishwatmananda Maharaj, revered Balabhadrananda Maharaj, Shantatmananda Maharaj, and all the brother monks
and dear devotees. Sadhana means spiritual practice, as you all know. Spiritual practice must always be followed by, backed by spiritual aspiration. Without spiritual aspiration, spiritual practice becomes very mechanical. One of the senior monks of our order very characteristically told, undergoing spiritual practice without Vyakulata, a deep spiritual aspiration without Vyakulata, is like trying to drive the car without petrol. It's obvious it is not possible to do that. So that means the Vyakulata must be there, that spiritual aspiration must be there, spiritual consciousness, spiritual awareness must always be very deep within us. Sri Ramakrishna used to say, we have to light a lamp of awareness within the shrine of our heart. It must always be burning. Lamp of spiritual consciousness, awareness. And he used to illustrate this with a beautiful example. In Bengal, they are mostly worshippers of Divine Mother. In every house there will be a shrine, and there will be a small image of Mother or a picture of Mother, and before that they light a oil lamp. That oil lamp must always be burning. The housewife every now and then goes to the shrine and sees whether it is burning or not. If it is not burning properly, brightly, she will pour some oil, clear the wick, and see it is always be burning day and night. Similarly, Sri Ramakrishna says, we have to keep this lamp of awareness within our heart always be burning. In the midst of all different kinds of activities, household chores and empirical dealings, etc., we have to come back to ourselves and again and see whether it is burning or not. If it is not burning, we have to make it burn bright. And how to make it burn bright? We have to pour oil. We have to clear the wick. What is that? Pouring oil means it is devotion. Oil represents devotion. You have to develop more and more devotion to God. And then we have to clear the wick. Wick represents the mind. Because of our dealing with the world outside, so many unwanted things get accumulated within the mind. Mind becomes impure. We have to clear it. We have to continuous purification must be there always. That continuous purification must be there. Then only the lamp will burn properly. And again, there are so many difficulties and problems and vicissitudes in life. We have to face them. They are all inevitable. And the wind of these difficulties, problems and vicissitudes of life, all this sometimes, makes this lamp put off because of the heavy wind of these things. To avoid this one, prevent that one, we have to put a glass cover to it. What is that glass cover? Sri Ramakrishna says, it is Shraddha. We have to have that Shraddha also. Then what happens? This lamp of awareness will continuously burn within our heart. Then that light, will guide us. That lamp will shed light on all the undertakings of ours. So that means Sri Ramakrishna indicates that whatever our undertakings, whatever our activities outside,
we must always remember that we are the spiritual aspirants. Spiritual identity must be strong. Whatever may be our activities, one may be indulging in politics, one may be doing the business, one may be doing so many other things, working in the office, etc. But whatever may be his position, that I am the spiritual aspirant. I may be doing business, doing politics and all that, but primarily I am a spiritual aspirant. So that identity, spiritual strong identity must be there. That's what Sri Ramakrishna says. He says, our ego is there. Ego will not go so easily. However much we try to suppress it in some other way, somehow or the other, it raises its head. So this, since it is not going at all, it is so difficult to remove it. Let it remain as the servant ego, child ego. I am the servant of God. I am the devotee of God. I am the child of God. In this form, let this ego remain. So that means there are so many egos are there within us, but one ego must be very strong. That is spiritual ego. I am the spiritual aspirant. That spiritual identity must be very strong within us. This identity we have to always maintain. So that for that, regular spiritual practice is always necessary. This is a subjective point of view. So objectively, if you look at the whole spiritual life, Sri Ramakrishna says, our human goal of human life is God realization. And he used to tell a very simple story to illustrate this point. Some friends went to a mango orchard. One of them, you all know the story very well. One of them started counting the mango trees, how many types of mangoes are there, trees are there, and went on counting and calculating, writing down. Another person started counting how many branches are there in each tree. Another fellow engrossed himself in counting the leaves. Only one person was there. He was very clever, very intelligent. Without doing all these things, he straight away climbed the tree and started eating the mango. Sri Ramakrishna says, you have come here to eat the mango. Eat the mango and be happy, enjoy. Enjoy life, eating the mango. So that means mango is the very essence of the tree. Whole essence of the tree consists in that fruit. We grow mango trees only for the sake of the fruit, not for anything else. So eating the mango means enjoying the real essence of our personality. Our real essence of the personality is God, the divine nature within us, spiritual nature within us. We have to enjoy that spiritual nature, realize that one, manifest that one. Counting the leaves, counting the branches, counting the trees and all this is okay. Indulging in other activities in life, that's also okay. There is nothing wrong in that. But being engrossed in that and forget to eat the mango, it's very wrong. That's what Sri Ramakrishna says. So we have to eat the mangoes, that we have to manifest the divinity within already there. So it is why Sri Swami Vivekananda says, the religion is the manifestation of divinity already within us. We have to manifest that divinity. When this divinity is manifested, our spiritual nature is manifested, then our life becomes fulfilled. Sense of fulfillment comes. Sarthakata. Jivana sapal hoy, as he sang. So that is why the sapalata is very important. The full sense of fulfillment is important. Interestingly, the evolutionists are of the opinion that when the evolution reaches the stage of man,
In man, the happiness consists in the sense of fulfillment rather than in sense enjoyment. So that's why Swami Vivekananda says, happiness is not the goal of life. Knowledge is the goal of life. Knowledge is the goal. If happiness were the goal of life, it would be a mistake to born as human being at all, he says. So that is why the real sense of fulfillment is possible only our potential divinity is manifested. Only when our potentialities are manifested, only then the sense of fulfillment comes. For example, the seed is there. Seed can be used for so many other things. We can cook with it. We can use it for decoration. We can use it for playing, etc. But only its purpose of existence is fulfilled only when it is allowed to germinate and grow itself into a huge tree. So that is why, by expressing its own, manifesting its own inner essence, it grows itself into a huge tree. So that means manifestation of our potentialities is most important. There are different potentialities are in our within us. There is a power is there, knowledge is there, capacities are there, talents are there, love and charity is there. And also ultimately the potential divinity is there. By graded way we have to manifest all these things. Then our real sarthakata will come, the sense of fulfillment will come. The sense of fulfillment is most important. As human beings, we must always aspire to derive the happiness from sense of fulfillment rather than from sense enjoyment. So that is why the sense of fulfillment is most important thing. That gives a real joy, real happiness in our life. So other most important thing, the growth we think of growth, talk about growth and all that. Growth is always from within. There is a very beautiful saying in English. When the egg is broken from an external force, the life ends. When the same egg is broken from the internal force, life begins. So that means the growth is always from within. We have to grow from within. So that is why Swami Vivekananda said, you don't have to get anything from outside. Everything is there within. The power is there, glory is there, goodness is there, the love is there, charity is there, everything is within us. We have to manifest that one. That is the goal of life. That gives us the real great sense of fulfillment. So that is why this sense of fulfillment is a most important thing to be attained. For this, as I mentioned already, the Vakulata. Sri Ramakrishna always emphasized this Vakulata. Sri Ramakrishna's real life, if you look at the Sri Ramakrishna's life, what an amount of Vakulata he had for God realization. It is fantastic. So elevating, so inspiring. That Vakulata must be theirs, but it won't come so easily. It's not so easy to get it. That there also there are different stages are there. In the beginning, initial stage, our Vakulata and spiritual aspiration is mixed up with so many other things also, worldly ambitions also, desires also, of course. But gradually it must be purified. It must be intensified. That is why Sri Ramakrishna says, first you have to hold on to the feet of God in one hand and do the worldly activities in the other. Then a time will come when you are able to hold on to the God with both the hands. So that is why you have to, first of all, we have to hold on to God, have a tremendous faith in God, hold on to God and indulge ourselves in different kinds of activities. Then gradually what happens, great vairagya will come, spirit of renunciation will come. At that particular time,
a stage, Sri Ramakrishna says, world appears to be great, deep well. I am going to get drowned within it. So afraid, so terrifying it is. And also all the relatives appear to be a cobra. They are all cobras. It appears like that, it seems. So that is how, this is a negative side of Vairagya. Negative side of Vairagya. As one progresses, then what happens, the world is forgotten. You won't think of the world, whether it is good or bad, whether it is a, cobra or it is a deep forest or whatever that may be. So many different explanations are there about the beautiful, very horrifying descriptions are there of the samsara. And you won't think of the samsara at that time. World is forgotten completely. Then only he will be able to hold on to God with both the hands and proceed. This is how different stages of spiritual aspirations would be there, spiritual Vyakulata would be there. One has to pass through all those different stages of spiritual aspirations. So, there is a very beautiful saying is there in English by a Buddhist monk. A very nice saying. I will quoting that one. After quoting that one, I will conclude. If you want 1 hour's happiness, take a nap. That's what he says. If you want 1 hour's happiness, take a nap. You sleep nicely, 5 minutes or 10 minutes, very good sleep you will get, and you will feel so refreshed. If you want 1 day's happiness, go for shopping spree. So some people are having the habit of going to the shopping for every day. They will go to the mall or a supermarket or purchase everything, whether they want or not. They will all sorts of things they will purchase. They will happy and come back, and again next day again they have to go. So he further says, if you want 1 month's happiness, you have to go for honeymoon. I don't want to explain that one. And he further says, if you want 1 year's happiness, inherit a fortune. So you get, the forefathers' property, so much of crores of rupees you will get, and you will enjoy for a year, go to the America or some other places and exhaust all the money, and you come back. And all money is exhausted. And again you are miserable again. And if you want a lifelong happiness, help someone else. That's what he says. And he further says, if you want eternal happiness, know thyself. We have to know our own self. That gives a real great sense of fulfillment. That is real happiness. That is real happiness. So I am very happy to be here and speak few words. I am very thankful to Swami Shantatmanandji for inviting me, to giving the opportunity to participate in this August function. When I think of Swami Shantatmanandji's activities and his dynamism and multifaceted talents and all that, I am reminded of Swami Yatishwaranandji's one statement. Swami Yatishwaranandji says, spiritual aspirant must be physically dynamic, intellectually brilliant, and emotionally beautiful. Emotionally beautiful means one must develop a positive emotions and have a very loving, lively relationship with all others. So with these few words, I conclude my speech. Our next speaker is Revered Swami Vishwatmanji Maharaj, Adhyaksha Ramakrishna Advaita Ashram, Varanasi.
संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। पूज्यपाद स्वामी गौतमानंद महाराज, स्वामी नित्यस्थानंद महाराज, स्वामी बलभद्रानंद महाराज, संतात्मानंद महाराज, मेरे प्यारे सब साधु भाई गण, माता जी और रामकृष्ण के प्यारे संतान भक्तगण, आज का विषय स्वामी संतात्मानंद महाराज ने जो ठीक किया है, मुझे लगता है हम लोग सबको ठीक से समझ लेना जरूरी है। इंग्लिश में तो है साधना अकॉर्डिंग टू होली ट्रियो, दिव्य त्रयी की उपदेश की हुई साधना। प्रत्येक धर्म की, प्रत्येक संप्रदाय की अपनी एक साधना होती है। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, संक्षेप में रामकृष्ण संघ, आगे चल के रामकृष्ण भावधारा और उससे भी आगे चल के रामकृष्ण धर्म। ये रामकृष्ण धर्म की साधना क्या है? प्रत्येक संप्रदाय की अपनी साधना होती है। वैष्णव संप्रदाय की अपनी साधना, क्या मंत्र, क्या जप, क्या तीर्थ, कैसे तिला टपका करना, कैसे माला पहनना, क्या खाना, कहाँ क्या नहीं खाना, क्या पहनना, पूरी लाइफ को आपको एक आउटलाइन देके कंट्रोल कर देते हैं। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों की अपनी अपनी साधना और अपनी अपनी एक गाइडलाइंस रहती है। विश्व धर्म की भी अपनी साधना और अपनी गाइडलाइंस रहती है। जैसे मुस्लिम धर्म के 5 पिलर्स हैं, ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म का संडे धर्म और मॉर्निंग इवनिंग प्रेयर और सत्कर्म इत्यादि है। रामकृष्ण धर्म की साधना क्या है? रामकृष्ण तो कोई संप्रदाय नहीं स्थापित किया जिससे एक नैरो ट्रैक में उनकी साधना प्रणाली को बता दे सके। रामकृष्ण वैश्विक है और रामकृष्ण अनंत भावमय है। और जब अनंत भावमय वैश्विक होता है, जहाँ सर्वधर्म की साधना जतो मत ततो पथ का प्रिंसिपल के ऊपर में चलते हैं, वहाँ एक विशेष रूप की साधना बताना संभव है क्या? ऐसा तो लगता है संभव नहीं। स्वामी विवेकानंद ने भी बोला है जो ठाकुर तो अनंत भावमय, उनकी एक व्यक्ति के प्रति, अधिकारी विशेष के प्रति विभिन्न तरह का उनका निर्देश और साधना पद्धति वे सिखाते थे। मगर एक सांप्रदायिक और एक धार्मिक, एक यूनिवर्सल साधना फॉर रामकृष्ण संघ, ये रामकृष्ण के जीवन में इस ढंग का नहीं मिलता। रामकृष्ण के जीवन की एक प्रधान धारा साधना की मिलती है हम लोग को, जो उनकी सब साधनाओं के अंदर में मिली हुई है, जिनका स्वामी नित्यस्थानंद महाराज ने उल्लेख किया था। और वह है व्याकुलता। अगर कोई पूछे कि रामकृष्ण की साधना क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन इत्यादि इत्यादि इत्यादि, तो लिमिटेड हो जाएगा। मगर सब में एक जो सूत्र चल रहा है वह है व्याकुलता। तिनटान वे जो बोलते हैं, उसको समझाने का समय नहीं है, मगर तिनटान और व्याकुलता का अर्थ है मन की समग्रता। जहां तक आपका हृदय समग्र रूप से परमात्मा के प्रेम से आपूरित नहीं हो जाता, या आप संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होकर अपने आप को मिटा नहीं देते, वहां तक वह परम तत्व प्राप्त नहीं होता।
रामकृष्ण के जीवन में वह व्याकुल से मिला जो काली का दर्शन खड़ग लेके काटने के अपने गला गया, वे हम सब जानते हैं। ये मुख्य धारा है, मगर वो छोड़ के छोटे छोटे छोटी बहुत बात है। भक्त लोग बोलते महाशय तो उपाय क्या? एकांत में जाओ, सत्संग करो, सत असत विचार विवेक करो, जागृत करो, मोने बोने कोने इत्यादि साधना करो, बड़ो बाड़ी जिए मतो थाको इत्यादि। किंतु प्रधान उपदेश अगर उसमें से हम लोग निकालना चाहे तो क्या निकलेगा? अद्वैत ज्ञान आंचले बेंदे जा इच्छा ता करो। ये रामकृष्ण का जीवन की मुख्य उपदेश हम लोग बोल सकते हैं। तो ये रामकृष्ण का जो उपदेश हम लोगों को मिलते हैं, ये एक एक व्यक्ति के प्रति अलग अलग ढंग से है। एक धारा रामकृष्ण की जो बातें हम लोगों को मिलती हैं, ये सांप्रदायिक साधना है, ऐसा रामकृष्ण के जीवन में से एटलीस्ट हमको नहीं बताया और कोई ने बताया भी नहीं है। मगर ये बात जब माँ के पास में आती है, माँ जो भी ठाकुर ने सिखाया सब माँ सिखाती है, क्योंकि वो तो अभिन्न रूप से एक है दोनों, इसलिए उसमें कोई विभिन्नता नहीं है। मगर थोड़ा सा कुछ शेप बनने लगा है, एक पैकेज बन जाता है साधना का। और वह पैकेज क्या है? मंत्र दीक्षा। ठाकुर के पास से माँ को मंत्र मिला और माँ ने उस मंत्र का एक पैकेज बना दिया। जो आप लोग को जिसको भी मंत्र मिला है अपने हम संघ के गुरुदेवों के पास से, उसमें एक तरह का पैकेज है जिसमें सब कुछ आ जाता है। अगर उसको ही ठीक से साधना करे तो परमात्मा प्राप्ति तक ये पैकेज ले जा सकता है आपको। मगर माँ ये पैकेज के साथ में बंधी हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी वो माँ बोलती थी मैं 1 लाख जप करती हूँ, जैसे शांतात्मानंद महाराज ने उनको इंडिकेट किया था। कोई भक्त लिखा था जो मैं तो जप नहीं कर सकता हूँ माँ, क्या करूँगा, मुझसे नहीं होता है। माँ बोला उनको लिखो 15-20 हजार तो रोज करना होगा, ठीक से जप करना होगा, तब तो कुछ होगा ना। फिर कोई एक भक्त बोलता है ना महाराज मुझसे तो कुछ नहीं होगा। देखिए अधिकारी विशेष को जब कुछ बात बोली जाती है ना, तो जो ईश्वर अवतार है, जगत जननी जो है, वह बात बोलेगी तो वो कोई पैकेज में बंधा हुआ नहीं रहते हैं। तो मां किसी को बोल दिया अच्छा तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं करूंगी। एक आध व्यक्ति नहीं, अलग अलग व्यक्ति में 2 का नाम तो मुझको मिला था। एक इंदुभूषण सेनगुप्त को बोला, एक मथुर वैकुंठ बाबू को बोला तुम्हाके किछु करते होबे ना, जा करार आमी करबो। माँ बोलছে आउट ऑफ पैकेज, नो पैकेज, करुणा, कुछ भी करने का जरूर नहीं है, ईश्वर सब कर देंगे। तो सर्वशक्तिमान है, उसने ही तो बंधा है, माया ने शक्ति नहीं बांधा है। अगर शक्ति बोलेगी मैं खोल दूंगा तो कौन उसको रोकने वाला। तो ये ठाकुर के पास से आके माँ के पास में थोड़ा सा एक पैकेज तो हम देखते हैं। मगर स्वामी जी के पास में आके क्या मिलता है हमको, क्योंकि एक रामकृष्ण धर्म बनने जा रहा है ना, उसको फाइनल शेप तो हम लोगों को स्वामी जी के पास से मिलता है। ठाकुर ने चालू किया एक महाआध्यात्मिक वृक्ष किया, ऐसा वृक्ष भूतकाल में कभी हुआ नहीं है, जहां अध्यात्म की सब साधना एक व्यक्ति ने अपने जीवन में करके उसकी अनुभूति प्राप्त की हो और जाना हो जो सब साधना एक ही जगह में ले जाती है। इतिहास में यूनिक है, अद्वितीय है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। इसलिए रामकृष्ण को हम लोग अवतार वरिष्ठाई बोलने में एक प्रधान पॉइंट है, क्योंकि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसलिए ही रामकृष्ण को जगत गुरु बोल सकते हैं और कोई जगत गुरु बोलने को योग्य नहीं है, क्योंकि सब एक एक तरह की छोटी छोटी साधना सिखाते, छोटा छोटा धर्म सिखाते, मगर रामकृष्ण के पास में अनलिमिटेड धर्म है। धर्म इटसेल्फ, धर्म खुद वह रामकृष्ण है और वहां से जो निकलता है वह भी धर्म है। तो इसको स्वामी विवेकानंद ने जब सिखाते हैं तो कर्म योग में बोलते हैं तो सब कर्म की बात बोलते हैं, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, जिसमें बोलते हैं उनके साथ में ओत प्रोत हो जाते हैं, जैसे यही सब कुछ है और सब सेकेंडरी है।
कोई गुरु भाई ने बेलूर मठ में पूछा भी था, नरेंद्र तुम ये सब बात बोलता है ऐसा, जब जो बोलता है वही सब है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तुम हम लोग कोई ठीक बात बताओ। क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि नरेंद्र के द्वारा ठाकुर बोलते हैं, नरेंद्र जो सेव करेगा वही फाइनल होगा। ठाकुर श्री रामकृष्ण को और श्री माँ को समझने की शक्ति और किस में है? स्वामी जी में ही वो है, और इसीलिए स्वामी जी को श्री रामकृष्ण लेके आए थे। सप्तर्षि के एक शिवांश, नर नारायण के नर, इसका अर्थ क्या हुआ? अलग अलग स्वामी जी रामकृष्ण बोलते हैं, नर ऋषि के एक शिव का अंश, या एक नर नारायण के रूपी। जैसे रामकृष्ण सब भावमय सर्व देव देवी स्वरूप है, नरेंद्र भी शिव का स्वरूप, सप्तर्षि का शक्ति और नर नारायण का नर, ये सब का सम्मिलन जो शक्ति होता है वो शक्ति का रूप स्वामी विवेकानंद है। वह स्वामी विवेकानंद को जब ये प्रश्न पूछा तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है मैं बताऊंगा। स्वामी विवेकानंद ने जो उपदेश दिया वह उपदेश रामकृष्ण धर्म की आउटलाइन हम लोगों को दे देते हैं। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of this and be free. This is the whole of religion, and ये हमारी साधना। स्वामी विवेकानंद ने जब रामकृष्ण मिशन का रूल्स लिखे, नियमावली लिखी, उस नियमावली में साधना बोल के एक चैप्टर है। रामकृष्ण मिशन की साधना क्या होगी? साधुओं की और भक्त की। उस साधना का एक निर्देश स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की नियमावली ने, रूल्स फॉर रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन के जो हमारे आंतरिक है वो, उसको स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। उसमें यही बात उन्होंने लिखी, जो व्यक्ति ये चारों योग का अपने जीवन में समन्वय करेगा वह ही रामकृष्ण की छाछ में ढाला हुआ माना जाएगा। क्योंकि उसका रामकृष्ण का फॉलोवर कैसा होगा? जिसका हृदय पूर्ण विकसित है भक्ति, जिसका इंटेलेक्ट सब कुछ कंसीव करने के लिए सक्षम है, इंटेलेक्ट ज्ञान योग, जो कर्म करने में थकता नहीं है, ईश्वर की स्मृति के साथ में शिव ज्ञान जीव सेवा के लिए, और जब ध्यान में बैठता है तो समाधि में मग्न हो जाता है। ऐसा जिसके अंदर में सक्षमता आती है वह रामकृष्ण की मूषा में ठीक से ढालने योग्य बना जाता है। ये हमारी साधना है। 20 पॉइंट उन्होंने साधना के लिए लिखा है, सब तो बोलने का पढ़ने का नहीं, मगर ये एक मेन पॉइंट है साधना के संबंध में, सबका समन्वय। मैं जब रामकृष्ण मिशन ज्वाइन किया था, स्वामी आत्मस्थान महाराज के पास में ज्वाइन किया था, जिनकी शिक्षा विरजानंद महाराज से हुई थी, और विरजानंद महाराज की शिक्षा स्वामी विवेकानंद के पास से हुई थी। एक गुरु परंपरा वहां चली आती है। वे स्वामी आत्मस्थान महाराज हम ब्रह्मचारी लोगों को क्लास लिया करते थे। उसमें कभी कभी वे बोलते थे ये 4 योग का समन्वय, इससे सेवा योग कैसा बोलता है, जो रामकृष्ण का मुख्य, रामकृष्ण जितनी सेवा करते हैं वो सोशल सर्विस की सेवा नहीं है, ये आध्यात्मिक साधना। तो आत्मस्थान महाराज हम लोग को सिखाते थे ये 4 योग का समन्वय हमारे में कैसा है। जैसे हम लोग कोई भी काम करें तो उस काम में, जैसे स्वामी जी ने हमको सिखाया है, रामकृष्ण की, भगवान रामकृष्ण के पास से सीख के, शिव ज्ञानी जीव सेवा, जो भी सेवा हम लोग साधुओं भक्तों की या दुखी मानवों की, सफरिंग ह्यूमैनिटी की करने जाते हैं, सबके अंदर में ईश्वर को देख करके उनकी सेवा करना, मात्र सेवा करना, रिलीफ करना, इतना ही कर्मयोग नहीं है। हमारे परिवार में, हमारे मित्रों में, हमारे समाज में, सबके अंदर में ईश्वर का दर्शन करके उनके साथ में यथा योग्य व्यवहार करना, यही शिव ज्ञान से जीव सेवा। यहाँ
अगर उसको भक्ति योग से सेवा यज्ञ, ज्ञान योग से सेवा यज्ञ करना है, जो आत्मा मेरे अंदर में है वही तो विभू रूप में सबके अंदर में है, वही तो सबका जीवन है, वही सबका अस्तित्व है। मुझ में जो है वो सब, जिसको भी मैं देखता हूं वो सबके अंदर में वह एक ही है। तो जो मैं अपने जीवन के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए, कंफर्ट के लिए प्रयत्न करता हूं, ऐसा ही प्रयत्न मैं दूसरे के लिए करूं, वो भी मेरा ही सुख सुविधा है। इस ढंग से दूसरों की सेवा करना वो भी शिव ज्ञान है या ब्रह्म ज्ञान है, जीव सेवा। फिर महाराज बोलते थे कि जो भी कर्म करो, भक्ति उद्देश्य से कर्म करो, ज्ञान उद्देश्य से करो, मगर जो काम भी करो उस समय में वह काम छोड़ करके और कोई भी विचार को मन में ना आने देना, और वही काम करो तो राजयोग हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, समाहित मन हो जाना। जिस काम हम कर रहे हैं उस काम में हम बिखरा हुआ समग्र मन को उस काम के अंदर में ही रखे और दूसरे कोई विचार को न आने दे, तब उस कर्म की जो क्षमता बढ़ जाती है वो अनंत हो जाती है। इस ढंग से जब कर्म करते हैं तो वो कर्मयोग हो जाता। ऐसा कर्म जब करता है तो किसी से विचलित नहीं होता। विवेकानंद जो हम लोग को सिखाते हैं ना, इंटेंस वर्क एंड इंटेंस कामनेस, ये साधना है। 4 योगों की साधना को बोले तो इंटेंस कामनेस, आप जो भी करें मन अत्यंत परमात्मा में समाहित हो। और जब काम न करे तो मन को समाहित करने की ऐसी इंटेंस एक्टिविटी हो, क्योंकि मन को एकाग्र करने को छोड़ करके इससे बड़ी कोई इंटेंसिटी वर्क की नहीं होती है। तो या तो इंटेंस एक्टिविटी इन इंटेंस कामनेस या इंटेंस कामनेस इन इंटेंस एक्टिविटी, ये साधना विवेकानंद ने रामकृष्ण मार्ग से सीखी हुई साधना का एक प्रधान अंग है। अद्वैत ज्ञान आंचले बेंदे, जा इच्छा ता करो, ये दूसरा एक साइड है। ये क्या सिखाता है? डिवाइनाइजेशन ऑफ लाइफ। परमात्मा ब्रह्म की स्मृति, आत्मस्मृति के साथ में जो भी काम किया जाता है वो डिवाइन हो जाता है। और उस डिवाइनाइजेशन करना जीवन को, परमात्मा मय करना जीवन को, यही रामकृष्ण संघ की साधना का एक प्रधान अंग है। उस प्रधान अंग, ये भावों के साथ में जो मंत्र का पैकेज हमसे मिलता है गुरु परंपरा से, वो मंत्र की साधना, गुरु निर्देश अनुरूप करना और अद्वैत ज्ञान आंचले बेंदे, जा इच्छा ता करो, चारों योगों का समन्वय के साथ में ये रामकृष्ण धर्म की साधना है। इससे ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। मगर जाने के आगे स्वामी शांतात्मानंद महाराज को धन्यवाद देना कैसे भूल सकता हूँ। जो किया है यहाँ 3 साल में, और ये जो विराट यज्ञ, इसको मैं यज्ञ ही बोलूँगा, ये यज्ञ का आयोजन किया है। फिर ये इतना बड़ा कर्म को आरंभ करके पूरे भारत भर में जो मूल्य शिक्षा का प्रसार करने का एक महाप्लान बनाया है, ये तो रियली प्रशंसनीय है। प्रशंसा न किए बिना हम रह नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण हम प्रार्थना करते हैं स्वामी शांतात्मानंद महाराज को और भी शक्ति और भी भाव और भी आध्यात्मिक गहनता दे। उसके साथ में मैं प्रार्थना करूंगा, जो धर्म श्री रामकृष्ण ने सिखाया हमारे सबके अंदर में, वो धर्म का प्रकटीकरण हो। We now request Revered Swami Balabhadranji Maharaj, Assistant General Secretary, Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission, Belur Mutt, to kindly speak on this subject.
Most revered Gautamananda Ji Maharaj, revered Vishwatmananda Ji, revered Nityasthananda Ji, and dear Shantatmananda Ji. I offer my respectful pranams to Gautamananda Ji, pranams to Vishwatmananda Ji and Nityasthananda Ji, and loving namaskars and thankfulness to Shantatmananda Ji for inviting me to this occasion, which has surely become a holy dream come true for him. And surely he deserves all congratulations from all quarters for executing this project, which is also a very significant addition to the activities of the Ramakrishna Mott and Ramakrishna Mission. My pranams to all the senior Swamijis present in the audience, loving namaskars and best wishes to my monastic junior brothers and dear devotees. In 1980s, we had the good fortune of seeing a very respected monk at Belur Math, Swami Nirvanananda Ji. He was then the senior most vice president of the order. In his young age, he served his guru Swami Brahmananda Ji untiringly. And both Swami Brahmananda Ji and Swami Shivananda Ji blessed him that he would have Brahma Jnana. And towards the end of his life, he himself would say to some of his sevaks that he has indeed attained Brahma Jnana. Now one day he said this, which I am going to say. He said this and I happened to be present there. He said that people may come to us for receiving grace and diksha, but if they do not do sadhan bhajan themselves, nothing will be achieved spiritually. Do you think, this is said on another occasion, do you think that your guru will carry you, your guru will take you to the goal carrying you on his lap? No, you have to walk your road yourselves. Probably what he wanted to mean is this: you may have the good fortune of having refuge in a very powerful, competent guru, but still to derive full benefit of the grace already bestowed on you by your guru, you have to do sadhan bhajan. And Holy Mother also one day said to one of her disciples, what I had to do for you, I have done all that at the time of giving you initiation. But if you want peace immediately, you have to do sadhana. So sadhana is very much required for us. I'll present my talk in three parts. First of all, I'll discuss the basis of sadhana, what should be, then goal of sadhana, and the sadhana proper in brief. The basis of sadhana, or prerequisite of sadhana, is renunciation, both for the monastic followers of the Holy Trio as well as lay followers. Here the word renunciation we'll understand in the sense Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda used. All through my speech I will refer to Sri Ramakrishna either as Sri Ramakrishna or as Thakur. The Sri Ramakrishna, the meaning of renunciation as we find from Sri Ramakrishna, has both positive and negative component, and both we should have. Sri Ramakrishna says, Vishaye Virag and Ishware Anurag. This is Vairagya. You should have love for God, at the same time detestation for the worldly enjoyment. Both you should have. In Bhagavad, we come across a slok that is in praise of bhakti.
Yadrichaya, Bhagavan says, Yadrichaya mat kathadau yato shraddhastu ya pruman, naati sakta, naati virakta, bhakti yoga asya siddhido. Somehow, someone has developed a love or shraddha for God, and he is naati sakta. He is not very much attached to the worldly things, naati virakta, not very much detached also from the worldly attachment, worldly things. These kind of people are fit for Bhakti Yoga. Bhakti Yoga is beneficial for them. So, most of us like this. So, some amount of vairagya we should have, some amount of love for God, some amount of detestation for the worldly things. With that, we begin our sadhana life. We begin the phase of our sadhana in our life. So, Swamiji, so this is the definition of vairagya according to Sri Ramakrishna. Swamiji gives a positive definition of vairagya. In a speech given in the West, he says that this world, everything, every being in this world is God. Swamiji's definition of renunciation is this: deification of the world, divinization of this world. Everything, every being in this world is God. You have never come across anyone or anything which is not God. You have always interacted with God only. But God you have taken for table, or God you have taken for that man or woman. Now you change your look, change your view on this world. Now you see first the table, first God, then table. Swamiji calls this deification of this world. So you change your usual outlook on this world and deify your look on the world. This is Swamiji says renunciation. You discard world as world and take it back as God. Everything and every being is God. From this, I come to the second point of my talk. What is the goal of sadhana? Sadhana is not an end in itself. Sadhana should have a goal. The goal is this: to see God in every being, to see God in everything. Sri Ramakrishna says that to see God in your heart or to realize yourself as Brahman, it is Gyan. But when I see God in every being and I see everybody and every being as Brahman, that is Vigyan. He places Vigyan on a higher plane than Gyan. So Vigyan is our goal. Even Gyan is not goal. For the followers of the Holy Trio, Vigyan is our goal. That is why Sri Ramakrishna said to Swamiji, when he wanted Nirvikalpa Samadhi, he said that there is even a higher stage than Nirvikalpa Samadhi. Don't you remember the meaning of this song you sing? Jo kuch hai so tu hi hai. Everything that is existing is you only. So this is Vigyan. That is why Raja Maharaj Ji also said that real spiritual life begins after Nirvikalpa Samadhi. Turiyananda Ji, when he breathed his last, he said, Brahman is real. Jagat is real. Chant the glory of Sri Ramakrishna. Brahma Sattva, Jagat Sattva, bolo Sri Ramakrishna's joy. In Gospel also we find one devotee is asking Sri Ramakrishna, is the world unreal? What was Sri Ramakrishna's answer? Sri Ramakrishna says, after knowing him, world does not remain unreal anymore. So, this is our goal. Vigyana is our goal, to see God everywhere. Now, they are realized soul. They could really see God shining in every being. But what about us, the common people, common sadhakas or sadhikas? Shankaracharya, what he says in his commentary on this Thita Pragya Lakshana in the Gita, we can take help of that. So one phrase is, one sentence is there, Kritartha Lakshanani Yani Tani Sadhanani. Kritartha Lakshanani Yani Tani Sadhanani. Kritartha Lakshanani means
the realized souls, the natural characteristics of the realized souls, that should be our sadhana. So they are all Kritartha Purusha, Raja Maharaj Ji, Swamiji, or Turiyananda Ji, or Thakur himself. So they could see God everywhere. So what was their realization? That will be our sadhana. So here from comes the sadhana also. This is the reality. This definition of renunciation that was given by Swami Vivekananda, this is the ultimate reality for which we strive in our Ramakrishna order, Vigyan, for Vigyana. So what will be our sadhana? In our sadhana, there are two components, two-pronged sadhanas, we know, conventional sadhanas, conventional kinds of sadhana we know, which comprises japa, meditation, pilgrimage, bhajan, shraddha, everything, that will be there. That will be always intact. We must not pay less importance to that. Along with that, directly from this ultimate truth, this Vigyana, what we get? We get that what is worship, Shivogane, Jivasava. These are all modern sadhanas that we have received from the Holy Trio. So the component of our sadhana, integral part of our sadhana will be love, concern for others, Shivogane, Jivasava, etc. But great stress on japa and meditation also. Great stress on japa, especially Holy Mother and Raja Maharaj Ji, they will ask us to japa throughout the day. Sri Ramakrishna, Raja Maharaj will say, through all your work, the wheel of Nam should move. Through all your work, wheel of Namu should move. And Holy Mother used to say, just the clock is ticking silently throughout the day. Similarly, you go on repeating your mantra. So mantra is repetition of mantra is the easiest sadhana, and that is very much useful. That is very much, we have to do that, repetition of mantra, along with that meditation also. Generally, we are advised like this, that while you do your japa, you think of your Ishta Devata also. Japa and meditation should go together. This we are advised. So the efficacy or need of japa and meditation can never be overemphasized. Along with that, the stress is on service and work. The japa, regarding the mantra, Swami Ranganathananda Ji, he would very rationally explain this. So what is mantra? These are not several letters or words put together. He will say that just as we have formulas in mathematics and physics, similarly these mantras are formula in the spiritual world. E equal to mc square. A formula, small formula, but that represents a great truth of science or this physical world. Similarly, mantras represent profound truths of the spiritual world, and therein lies the seed of the spiritual fulfillment of the disciple. And we have to transform our work into worship, that we know. We have to serve living creatures as the veritable expression of God. Swami Turiyananda Ji used to say that Sri Ramakrishna says that if for 3 days continuously you can weep for God, then you can realize God. Turiyananda Ji says that if you can serve human beings perfectly in the spirit of Narayan Seva, Shivogane Jive Seva, then also you are able to see God. So this emphasis, our sadhana in our Ramakrishna order should not neglect any of these two components, the traditional form of sadhana, japa, meditation, bhajan, prayer, etc. Along with that, work is to convert work into worship and service of human being as in the true spirit of serving God, that should be there. Swami Dayananda Ji, he is the founder of our Seva Pratishthan, Ramakrishna Mission Seva Pratishthan, the biggest hospital of our order.
So every day in the evening, he'll go on a round in the wards of the hospital. So after maybe half an hour or 1 hour, he'll come back to his room, evening, and he will sit on his asana and start doing japam. So a junior sadhu one day asked, Maharaj, you go to hospital every day and you come back, you don't change your clothes, not even sprinkle Ganga water, you immediately start doing your japa and meditation. Then Maharaj listened to him. Then he asked, do you change clothes after visiting temple? Why, Maharaj? Why should I change clothes after visiting temples? So I'm also not changing clothes. He said this much. So this is the attitude. This is the attitude. We have only one kind of love. We have love of God. Love of God is love of God. And love of human beings also is love of God. This we should know. Only one love is there. In Hinduism, you see, in the same way, we show respect to human being as well as to God, with folded hands or touching feet. So only one love is there, love of God only. We love God by loving God directly, and we love God through human beings only. Similarly, we have to convert work into worship. This is the form. There is no difference between the ways of sadhana of the monastic followers of Ramakrishna, Sharada Devi and Holy Mother, and the ways of sadhana for the lay disciples of the Holy Trinity. The same kind of sadhana is there. So our sadhus, Ramakrishna Mission monks, they never disclose anything about their spiritual attainment. They never say. If they have not seen God, they will never claim that I have seen God. Even if they have realized God, they will never say that they have realized God. These are both advantage and disadvantage. But we take it for granted, like our persons like Nirvanananda ji, by our Gurudev Maharaj Jis, who have become that Bahaduri cart, that great lock that can float itself as well as can carry other birds, etc. also. So they have become that great log, Bahaduri cart. So we feel, also coming in contact with them, we feel that they have reached the ultimate goal. So in their life also we find that throughout the life, they have maybe if each day is taken into account, we'll find that every day they have perhaps devoted 2 or 3 hours for japa, meditation, chanting, sadhya, the conventional form of sadhanas that we mean. For that maybe 2 or 3 hours or 4 hours they have devoted every day. And most of the day they have dedicated for doing work or for serving others. But they have surely been able to convert work into worship. They have surely been able to convert their seva into puja, Ishwar puja, Ishwar seva. That is why those part, the greater part of their days also have become sadhana. For God realization, what is required is that you think of God or you meditate on God, you do your sadhana nirabachinna toilo dharavat, uninterruptedly for the whole day you have to do. This way every day will go, then only God will be a reality. So if we do only japa and meditation, 2 hours, 3 hours, 4 hours, it is too equally for us the monks as well as you the lay disciples staying in home, that you can never convert your 24 hours into meditation, into spiritual practice or sadhana, unless you can convert your work into worship, unless your service for your known people, near and dear ones, into puja. So their life, so it is possible, they have been able to do that, and they have realized, they have reached the goal also. That is why they can provide spiritual guidance to so many people. So this is the ideal, this is the sadhana.
Our word, our japa meditation, Swamiji says, Atmano mokshartham jagodhitaya cha. This is not only for monks, us monks, for you also. Atmano mokshartham, this conventional sadhana, our attempts to Atmamukti is attempts to Atmamukti. Our jagodhita activities are also attempts to Atmamukti. So, we have to make these two things. One, stress should be there on both things. This conventional sadhana of japa, meditation, pilgrimage, and occasional tapasya. We can take leave. Our sadhus are allowed to take leave and go into tapasya. Still nowadays, our sadhus are capable of doing intense tapasya. Our Bhajananandaji Maharaj says, that not that we cannot meditate for long, not that we cannot spend our time in solitude. We can do that. But as Swamiji has instructed, as we have been instructed by our Guru, we are doing this. We are doing a work also. But that work you see as work. Our Jagodhita, our welfare activity, the Jagat sees that we are doing Jagodhita. But in our eyes, in our internal feeling is this, that is also spiritual practice, and japa and meditation also is spiritual practice. That is why when we join, we are repeatedly told that Ramakrishna Mission is not a philanthropic organization. Ramakrishna Mission is not a charitable organization. It seems, from the people outside, it may seem like a philanthropic organization. Through philanthropy, we worship Sri Ramakrishna only. So this should be the ideal for you also. I mean, the lay disciples also. The characteristic, unique characteristic of our sadhana is nicely expressed in these words of Raja Maharaj Ji. He, in this spiritual, he gave this spiritual, this is an instruction to the brahmacharis. He says, just like a formula you can say, meditate, meditate, meditate and serve his creatures. Meditate, meditate, meditate and serve his creatures. The characteristic of our sadhana. And this is the same sadhana, as I said. This is applicable to us, the sadhus, as well as you, the lay disciples. So, this way only we can proceed. And God realization, what we realize by, what we mean by God realization, that will be a reality in our life. Sri Ramakrishna, Holy Mother, once a sadhu asked him, he has this impression that if I do japa and meditation intensely, do the traditional tapasya, then only God can be realized. He is asking, Maharaj, how God can be realized? The mother says, by his kripa only, by his kripa only. By nothing else? No, by nothing else. Thrice he asked the question. By nothing else? No, nothing else. By his grace only, he can be realized. You can see him or you can realize him. So then it may sound discouraging. So what is the use of doing so much sadhana? No, it is not so. It is not so. The mother explains. But what is the effect of Japudhan, Sadhan Bhajan? Do you know what is the effect of this Sadhan Bhajan? That way the disturbance from the senses, that stops. Distracting effect of the senses stops. So that is also a great achievement. Suppose we have not been able to realize God, but while we breathe our lust, if we can do that with a heart full of love for Thakur Ma Swamiji, that is also not a small spiritual attainment. So I'll tell you one incident. If you cannot do anything, at least this can do. Swami Brahmananda ji went to Bangladesh, East Bengal at that time. So for several months perhaps, or several days, several weeks, he stayed there. He gave initiation to many, and that day he was leaving, and he has reached this station, and train is coming. Almost train has reached. At that time, a young girl came there rushing. She did not know. She went to the house where Swami Brahmananda stayed, and there she came to know that Maharaj Ji has already left, so she has come to station, and she fell prostrate at his feet and begged for some spiritual instruction. Then the train has already arrived. The Maharaj Ji said, you see, there is no time to give you any spiritual instruction.
But I tell you this, read Gospel of Sri Ramakrishna every day. You will find everything there. You will find everything there. So, why he said like this? Because avatar is there. This is the great advantage of our order for the monastics as well as lay disciples of this order, that this order is creation of the divine incarnation of the age. We have two avatars, not two avatars, three avatars. Thakur is the avatar of Bhagavan, Holy Mother is the avatar of the Divine Mother, and Swami Vivekananda is considered as avatar by some. Sharadanandaji said, why do you call Sri Ramakrishna avatar? Swamiji himself is the avatar. Surely he is the avatar of Shiva. So three avatars are active in this organization. Of course, avatar is for the entire world, but specially they are active here. So that grace is also always there. Sadhana is required. What Vishatmanaji said, the Holy Mother, he can make exception also. The avatars can make exception also. Avatar is Kapal Mochon. Only avatars can make exception. Even without sadhana, they can give us liberation, the highest things. So, surely we'll do sadhana. At the same time, we will have to have this faith in the, this great power of the three avatars who are specially active in our order. So, we'll be prayerful also always. We'll do our bit. We'll try it. We'll struggle, surely. Self-effort and prayers both are required. One of the senior Swami, he's still alive, he says to the junior brothers, try and cry. Try and cry, he says. Try. We have to try. At the same time, we'll have to cry for their grace. This way, we can achieve God realization. Even if we do not achieve God realization, we can have that heart full of love for Thakur Mahai Swamiji. And as I said, if we can end, if our life ends that way, that also will not be any small spiritual achievement. So I am always fond of quoting from Ranganathanji Maharaj, because he puts everything in a very rational manner. Just as Swamiji used to do. Swamiji's Bhakti Yoga also very much treated rationally. So I will end quoting from him. As we grow spiritually, what kind of personality we become? So it is off-quoted also, but I'll quote to you again and close my talk with that. Are you growing spiritually? Can you love others? Can you feel oneness with others? So the special characteristics of our sadhana, Ramakrishna Mission sadhana, that is expressed here also. Are you growing spiritually? Can you love others? Can you feel oneness with others? Have you peace within yourself? And do you radiate that peace around you? That is called spiritual growth, which is stimulated by meditation inwardly and by work done in a spirit of service outwardly. We have to do both. Both our sadhus and householder devotees have to do both, and we have been doing both. Namaskar, regards. We now request revered Swami Gautamanji Maharaj, Vice President, Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, to give his benedictory address.
जगज्जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। प्रिय साधु वृंद, सब रंगमंच पर रहने वाले, मेरे सामने रहने वाले और प्रिय भाइयों बहनों, भक्तों, हिरिजनों, माताओं, अब तक बहुत सुंदर भाषण आप सुने हुए हैं। अब समय का अभाव है बहुत। आप जानते हैं अब तक सभा समाप्त हो जानी थी, फिर मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, तो आप सब लोगों के बीच में थोड़ा सा भय हो सकता है। ये स्वामी जी और एक भाषण चलाएंगे। अभी मैं भाषण देने को नहीं जा रहा हूँ, आशीर्वचन बताऊँ, क्योंकि भाषण में जो जो देना सुनना था सबको सुना दिया है। ये चारों वक्ताओं ने बहुत सुंदर आप सब लोगों के सामने हमारे ये मिशन के विशेषता के बारे में आपको समझाया है। शांतात्मानंद जी ने कहा है, साधना एवं सेवा ये हमारे रामकृष्ण मिशन की विशेषता है। हम साधना भी करते हैं, साधना का शक्ति जो मिलती है हमें, उसको विश्व प्रेम के द्वारा, विश्व प्रेम को सेवा के द्वारा व्यक्त करते हैं, सबों की सेवा में लगाते हैं। इसी तरह मुझे और बताना चाहिए, इस सभा का आरंभ बहुत सुंदर गान से शुरू हुआ। कृपाकरानंद जी से मुझे उनको बधाई देता हूँ। बिल्कुल ठीक भजन ब्रह्मानंद जी का, चेतन देव से देव की सेवा करो धन्य हो जाओगे तुम्हें। स्वामी विवेकानंद जी को उपदेश का सार है, मनुष्य के अंदर भगवान को देखो, उसकी सेवा करो धन्य हो जाओगे। तो ये गान बहुत अच्छा गान, मैं जब ब्रह्मचारी था इसको गाता था, उसी को आज को सुन के बड़ा आनंद हुआ। तो कृपाकरानंद जी को तो मेरा बधाइयाँ। और बहुत अर्थपूर्ण आरंभ हुआ ऐसा। और शांतात्मानंद जी ने बताया है हमको, तो हमारे मिशन का, ये रामकृष्ण मठ मिशन का टिक साधना भी है एवं सेवा है। ये सेवा भी तो साधना ही है। तो इसको उन्होंने समझाया। और नित्यानंद जी तो बहुत कुछ समझाए, व्याकुलता को बहुत सुंदर रूप से समझाया। और हमें आखिर में मिलना क्या है? फुलफिलमेंट, आत्मतृप्ति मिलनी चाहिए। ये ठीक व्याकुलता से साधना के जरिए जो हमारा जिस सर्वभूतों में इस आत्मा का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है, उस दृष्टि से हम शिवज्ञानी जीव सेवा करते हैं, तभी हमें आत्मतृप्ति मिलती है। इस रूप में उन्होंने बहुत सुंदर बहुत चीज़ें समझाए। और विश्वात्मानंद जी ने रामकृष्ण धर्म की साधना सेवा योग है। ये सेवा योग तो आत्मस्थानंद जी की उन्होंने जिक्र किया। और शिवज्ञानी जीव सेवा ये साधना है। ये रामकृष्ण मिशन के सबसे बड़ी साधना। अपने लिए तो आत्मनो मोक्षार्थम हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं और गुरु के प्रति श्रद्धा और दूसरे आश्रम के कर्तव्य करते हैं, वो अपनी साधना मोक्ष के लिए। और जगत हिताय च, जगत को भलाई करने के लिए हम शिवज्ञानी जीव सेवा, उसी के बारे में विश्वात्मानंद जी ने बहुत सुंदर बताया। यह रामकृष्ण धर्म की सुंदर साधना है। सेवा योग हमारा काम नहीं है, ये सेवा है। सेवा के अंदर, इसमें सेवा के अंदर भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, भगवान का ज्ञान होता है। इन तीनों को हम मनुष्य के अंदर भगवान को देखते हुए करते हैं। तो इसका बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया। और बलभद्रानंद जी तो बहुत सुंदर रूप से समाप्त किया उसको। तो हमारे बड़े साधु स्वामी दयानंद जी श्री माँ के शिष्य थे और हमारे कलकत्ता के
सेवा प्रतिष्ठान अस्पताल को आरंभ करने वाले थे, तो उनके बारे में बहुत सुंदर बताया। वो अस्पताल चक्कर लगा के सीधा जाके ध्यान करने को चले गए, न गंगा जल लिया, न स्नान किया, न अगरबत्ती जलाई, सीधा ध्यान में बैठ गए। तो ब्रह्मचारी ने जो पूछा, आपने तो कुछ नहीं किया, गंगा जल का भी तो छिड़काए नहीं, जिसको कम से कम करना था। तो उनका प्रश्न था उससे, तुम मंदिर से आओगे कि गंगा जल छिड़काओगे? अर्थात अस्पताल में जो काम करते हैं हम, वो भगवान की सेवा है। वो ऑर्डिनरी अस्पताल नहीं है, वो भगवान की सेवा करके आ रहे हैं। देगुल से आके क्यों हम गंगा छिड़का रहे हैं? इसको बहुत सुंदर रूप से समझाया। और आखिर में मुझे कहने के लिए क्या रहा, मुझे एक छोटी सी कहानी ये विश्वात्मानंद जी के मुँह से सुना था, उसी को कह के मैं दो एक शब्द से समाप्त करूँगा। विश्वात्मानंद जी ने एक भाषण में बताया, एक बच्चा और पिताजी को बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। पिताजी कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस में, ये बच्चा चला गया, वो उनको ऑफिस में काम करने को नहीं देते, तो वही बहुत डिस्टर्ब करता है। इस बच्चे को किसी तरह दूसरा काम में लगाना पड़ेगा, तब तो हमारे पास नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या किया, ये भारत का मैप लेके उसको चूर चूर करके तोड़ दिया, तोड़ के छपा हुआ भारत का मैप, तो एक किसी पुस्तक से निकाला होगा, उसको निकाल के तो उसको चूर चूर करके 8 भाग के 10 भाग करके उसको दे दिया। तुम भारत को जानते हो, तो ये भारत माता से एक हो जाए, ऐसा इसको जोड़ दो और गम लगा के, गोंद लगा के इसको ले आओ। तो ये बच्चा ठीक है लेके गया और उनको डिस्टर्ब नहीं किया। फिर उन्होंने सोचा कि कम से कम 1 घंटा 2 घंटा लेगा, क्योंकि ये कौन उत्तर में है कौन दक्षिण में है, सब तो जुड़ाना है ना। तो उसने 4 मिनट के अंदर इसको करके आ गया, पिताजी हो गया। पिताजी देखते हैं तो बिल्कुल जोड़ दिया है। अरे कैसा किया तुमने? तो हमने भारत को नहीं जोड़ा, उसके पीछे देखिए एक मनुष्य का पिक्चर है, उसको जोड़ दिया हमने, तब भारत जुड़ गया। ये है रामकृष्ण मिशन की सेवा का लक्ष्य। हम मनुष्य को जोड़ते हैं, भगवान श्री राम कृष्ण के भक्ति को हम प्रचार करते हैं, भगवान श्री राम कृष्ण के विचारों को प्रचार करते हैं, माता जी के विचारों को प्रचार करते हैं। और उन्होंने जैसे बताया, हम भी उसकी जैसे जीवन यापन करेंगे, दूसरों को भी जीवन यापन करने के लिए कहेंगे। तो इससे क्या होता है, मनुष्य जुड़ जाता है, देश भी जुड़ जाता है। देश को जुड़ाने के लिए कितनी चेष्टा की जाती है, कितने भाषाओं की विविधता है और संस्कृति की विविधता है और दूसरे बहुत सी कुछ विभिन्नताएं हैं। फिर लोगों को जोड़ना इतना आसान काम नहीं है। सिर्फ न केवल ये देश की समस्या इतनी है और दुनिया की समस्या कितनी होगी, तो दुनिया को कैसे जोड़ें? कम से जब तक तो दुनिया जुड़ेगा नहीं, तब तक तो विश्व शांति, तो विश्व सौहार्द, ये सब तो बड़ी तो कोई पे करके बात हो जाएगी, तो कोई अर्थपूर्ण बात नहीं होगा। इसलिए तो दुनिया को कैसे जोड़ें? मनुष्य को जोड़ो। मनुष्य को कैसे जोड़ोगे? भगवान श्री राम कृष्ण के उपदेशों से। ये कि एक उदाहरण दे के मैं समाप्त करूँगा। तो हमारे विशाखापट्टनम में बहुत से मछुआरों को स्वामी वीरेश्वरानंद जी ने दीक्षा दी थी। कुछ अनपढ़ हैं, बिल्कुल निरक्षर अनपढ़ हैं, तो उनको बहुत से करीब हज़ारों लोगों को, 1000-1500 लोगों को उन्होंने दीक्षा दी थी। उनमें से कुछ लोगों को इतनी इच्छा हुई, वीरेश्वरानंद जी शायद समाधिस्थ हो गए थे, महासमाधि प्राप्त हो गए थे। उसके बाद मैं जब कलकत्ते में था, बेलूर मठ के पास में ही शारदा पीठ में मैं था, तब ये कुछ वो मछुआरे लोग तो श्री राम कामार पुकुर, जयराम वाटी, बेलूर देखने के लिए आए। उनका एक मुखिया था, वो मुखिया कुछ इंग्लिश जानता था, तेलुगु जानता था। ये मछुआरे लोग सिर्फ
तेलुगु जानते हैं, मैं तेलुगु नहीं जानता था। मैं समझता हूँ, फिर बोल नहीं पाता। तो उन्होंने सुना कि स्वामी गौतमानंद जी हैं, तो सब लोगों को वे पसंद करते हैं, चलो उनसे मिल के जाएंगे, वो दक्षिण से हैं। वह सिर्फ वो सबको लेके आए, 30-40 से मछुआरे लोग, निरक्षर। फिर बड़े आनंद से श्री राम कृष्ण देव के भगत हैं, तो जब करते हैं उनका मुंह से सुनाया गया श्री राम कृष्ण देव के जीवन और उनके उपदेश। वो इतना उसका तो ग्रहण किया था, उनको इतनी भक्ति थी, तो वे बेलूर मठ के दर्शन किए, दक्षिणेश्वर और दूसरे उद्बोधन के दर्शन करे। आखिर में कमारपुकुर में गए, जयराम वाटी गए, मेरे पास आए। मुझे उनसे कुछ बात करना था, इसलिए उस मुखिया से कहा, तुम इनसे पूछो, तुम लोग कमारपुकुर जयराम वाटी गए, विशेष करके जयराम वाटी में गए, तुम्हारा क्या अनुभव हुआ? उन लोगों ने तुम लोगों को कैसा अगवानी करी, तुम लोगों को कैसा देखभाल किया, तुम 2-3 दिन वहाँ रहे? उसने उनसे पूछा। उन सब लोगों ने कहा, बहुत सुंदर हमारा अगवानी करी, हमको इतने प्रेम से देखा, हम वर्णना नहीं करते, इसको बातों से कहने सकते, इतना आनंद हुआ हमें, मानो हमारे ही लोगों के बीच में आ गए हम, ऐसा मालूम हुआ। मैंने और एक कहा उस मुखिया को, तुम उनसे पूछो, अगर वो लोग तुम्हारे गांव में जाने से तुम क्या करोगे? उसने पूछा। उसके लिए उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने इतना प्रेम दिखाया, इतना अच्छा देखभाल करी, अपने घर वालों के जैसे हमसे बर्ताव किया, उनसे भी ज़्यादा हम करेंगे। मैंने कहा, ये ही है टीक टीक रामकृष्ण देव का ये प्रभाव। उनके प्रभाव से निरक्षर कुछ भी नहीं जानता है, फिर रामकृष्ण की भक्ति होती है उसके अंदर, वो जुड़ जाता है। वो आंध्रा के हो, बंगाल के हो, दक्षिण के हो, रामकृष्ण के भगत एक हैं, दुनिया के रामकृष्ण भगत एक हैं। हमको एक ही करना चाहिए, रामकृष्ण भक्ति को, रामकृष्ण के विचारों को, सब उनकी कार्य प्रणाली, इसको प्रचार करना चाहिए। वही हमारे संघ का इससे इस संस्था का उद्देश्य है। इससे ज़्यादा आज को बोलना ठीक नहीं है, इसीलिए यहीं मैं अपने बातों को विश्राम देता हूँ। जय राम कृष्ण। ओम शांति शांति शांति। Before we have vote of thanks, we request Swami Shantatmanji to honor the Swamijis on the dais by presenting shawl to them. We owe a deep debt of gratitude to Atma Shraddhananji because he has become an expert. So for all big functions he is called. It's so nice of him that he could spend 3 full days, and his announcements were impeccable and very, very interesting and nice. He has a sweet voice also. We are now going to honor our Sri Devashish Mukherjee is going to give the vote of thanks. He is there with us now for the past 13 years or so, right from the beginning of the value education work.
and he has many other contributions which I cannot describe. He will be extremely angry with me if I say all that. But you know, he is a kind of mentor for the program, and of course he is a brilliant IIT engineer. He is an expert in computer programming. So he is with us for so many years, and so I am honoring him. Actually, it's for the entire value team. We have 80 people working, about 45 on a very modest salaries, and the rest 40 doctorates and double masters and others. They are entering totally honorary services. They are actually led by Devashish, who is the mentor for the program. So honoring him means honoring the entire value team. Thank you. We also have one more awardee, Mr. Srinivas, who came from Belgaum, and he was introduced by the Belgaum Center to me. He has been such a pillar of support for this project. You know, in spite of his advanced age, he would be there. He says close by. Every day he would come. Not only that, Mr. Srinivas would bring refreshments for all the sadhus. We'll have about sometimes 5, 10, 15 sadhus coming, where all of them should spend, and just like mother. So just a small token, an expression of our gratitude. We request Sri Devashish Mukherjee, Mentor, Value Education, Ramakrishna Mission, New Delhi, to kindly propose a vote of thanks. Jananīṃ Sāradāṃ Devīṃ Ramakrishnam Jagatgurum Pādapadme Tayo Shatva Pranamāmi Muhurmuhu. My pranams to revered Swami Gautamananda Ji Maharaj. My pranams to revered Swami Balabhadrananda Ji Maharaj. Revered Swami Vishwatmananda Ji Maharaj. Revered Swami Nityasthananda Ji Maharaj. And revered Swami Shantatmananda Ji Maharaj. My pranams to all the monks and brahmacharis and matajis of the Sarada Mission, and my namaskar to all of you devotees of Sri Ramakrishna. It's a great honor for me to be extending the vote of thanks at this auspicious occasion, and by the grace of Sri Ramakrishna, the Holy Mother, and Swami Vivekananda, the 3 days long function to celebrate the inauguration of this center has been successful. I shall first thank most revered Swami Gautamananda Ji Maharaj for gracing this occasion. Maharaj, आप आए, हम सब पर आपकी स्नेह और आशीर्वाद का बौछार किया, इसका आभार हम शब्दों से नहीं कर सकते. हम तो श्री माँ से यही प्रार्थना करेंगे कि आप बार बार इसी तरह आए और हम सबको आपके स्नेह और आशीर्वाद से धन्य करें. Next, I must thank the 3 esteemed speakers of this session, revered Swami Balabhadrananda Ji, revered Swami Vishwatmananda Ji, and Swami Nityasthananda Ji. They have enthralled us, and the depth of each speech was exemplary, I mean, beyond words. I thank all the sannyasis, brahmacharis of Ramakrishna Mission in the audience, the Matajis of Sarada Mutt in the audience. आप सबकी उपस्थिति से इस पावन अवसर को
और भी पवित्र बना दिया है. And finally, I have to thank Swami Atma Shraddhananda ji for his perfect comparing and perfect role as the master of ceremony. A large team of volunteers have worked to make these 3 days a success. I thank them on behalf of revered Shantatmananda ji Maharaj. These celebrations are for 2 distinctly different purposes. We are inaugurating an institute, the Vivekananda Institute of Values, and at the same time we are establishing a Ramakrishna Mission Center at Gurugram. And all this would have seemed like pipe dream even 5 years back. And none of this would have been successful without the vision, the enterprise, and the single-pointed perseverance of revered Swami Shantatmananda ji Maharaj. Okay. And it has not happened overnight. It has taken 15 long years. I have been myself witness to 13 of those. And I'll very briefly, without boring you, go through some of the main events of this time period to show you how enormous this achievement has been. Okay. Soon after Maharaj took over the in charge of Ramakrishna Mission Delhi, he started 2 streams of activities. One was a value education program for school students, which was new to the ashram. And the other was, he encouraged the formation of Kathamrita study circles in various localities of the NCR. These were earlier not there in the ashram. The way this unfolded is quite surprising with a rear sight. Like, I'll start with the Kathamrita study circles. A Kathamrita study circle started in Gurugram. Okay. I still remember the very first such session. Maharaj had himself graced that occasion. And I remember he quoted from Kuvempu's introduction to the Kannada Gospel. Lovely words. The Gospel is not a book, it's like a temple, it's like a pilgrimage. The hand that holds the Gospel touches the feet of God. It was very inspiring. Unfortunately, immediately after that, everything fell cold, nothing happened. Few months later, another such initiative was taken, and it started at a different place, in Mr. Sushil Khanna's place. From then on, that Kathamrita study circle steadily kept meeting, kept happening. And in 2009, 15th of August, we had a meeting in which we had invited Shantatmananda ji to give us a discourse. And it was my responsibility to take him back to the ashram. So we were in my car, both of us sitting on the rear seat. Maharaj was to my left. And in our normal conversation, I happened to offer that I have some free time. I want to do some voluntary work for the ashram. Immediately, almost immediately, he held my upper left arm tightly. Okay? And that was my recruitment. Till day, he has not released that hold. Okay. I was into the valley education work. We were just 3-4 people. We had a program of hardly 5 hours. We had only 15 schools to go to. But we persevered. Nobody had heard of Ramakrishna Mission in Delhi schools, believe it or not. Okay, they didn't know the Ramakrishna Mission.
But then we started doing other work than value education. We started holding quizzes for schools and colleges, essay writing competitions. Maharaj had the idea of publishing a small book of Swamiji's quotations. We distributed 1 lakh copies, more than 1 lakh copies of that book to many schools. And slowly, not only our visibility in Delhi improved, but we had, as workers, improved in skills and quality. Okay? Then the year 2013 happened, and that was a watershed. Swamiji's 150th year. Again, Maharaj wanted to have a 3-year graded value education program for school students. Starting with Swamiji's idea of divinity of man, it would be elaborated and explained over 48 modules spread over 3 years. We had not any experience of that. Even that materialized. In fact, we were so unsure whether we could handle it, we ran a pilot project. And the pilot project was so successful that it was exhausting but very successful, that we got some confidence out of that. And then once the program was developed and we had decided that we will ourselves not go and teach in schools, we simply didn't have so many people to run it ourselves. What we would do instead is call teachers to our ashrams or institutes, give them a training, give them the material, the coursework, and they would in turn go back and implement it in schools. In 2014, April, we did the first training of teachers here in Delhi. By September, we had done it in Hyderabad, Hyderabad, Bhopal, and Calcutta. And before we even realized, this program was running in every district of India. And this really was the coming of age for us. We matured and we really understood that we could run something like this. Subsequently, we have added more courses for children of other age groups. And I'm sure within a few years or months, we will have a full set of courses for school-going children of any age, perhaps even for people of colleges, maybe of parents, maybe of corporate people, and so on. So this was one stream of activity which has come to this stage. The other stream, the stream of Kathamrita classes, increased over time almost in parallel, and there were people who joined, who dropped out, but slowly and steadily we had a very serious team of people who were residents of Gurugram and who were dedicated devotees. Okay? And they congregated from time to time, either in some devotee's place. Maharaj would sometimes come and give us discourses. And then, thanks to the generosity of an ex-serviceman, we had a permanent place for a study center or a study circle in Sushant Lok Phase 3. And that became a nucleus of a fairly substantial group of devotees who were willing to dedicate some of their time to service for the ashram. Maharaj was still looking very seriously for a piece of land, for an establishment, for an institute and an ashram. It's almost totally because of his doggedness, because of his perseverance, and of course, holy grace.
that we finally found a place, this place. Even that was not enough. I mean, there was so much work to be done. Offices had to be visited, bills paid, certificates chased. And slowly, these group of Gurgaon devotees helped with almost always a smile to all those non-glamorous work of a great thing. Today I see these two streams which Maharaj started off 15 years back, one like the Ganga of Sri Ramakrishna's ideology, which is embodied in the Kathamrita classes, and other the Saraswati of man-making education, which is embodied in the value education classes, coming together in a confluence here in this center. The thing is, where do we go from here? What is the direction forward? I am no soothsayer, I can't tell you what will happen. But one thing we know, that the direction we have to take is what Sri Ramakrishna, in one of his inimitable ways, said. It's there somewhere in the gospel. He said, you put 50 zeros behind a 1, the digit 1, it's a huge number. But you wipe off that 1, everything is gone. For us, I think the 1 is the shrine where puja and arati was performed by revered Maharaj yesterday. And if we lose focus of that, then all the buildings will basically become a pile of bricks and cement. Okay? So I'll end by really requesting all of you, appealing to all of you, to please let us pray to the Holy Mother. Oh Mother, may this small center of yours forever remain an oasis of spirituality in the middle of the desert sands of worldliness all around us. Thank you. Thank you for recounting the whole story of how this center has come up. Now, with this, we close this session. A small announcement. As due to tight schedule, pranams to revered Swami Gautamanji Maharaj could not be organized today. Tomorrow morning at 9:30 a.m. it has been fixed for pranams at this pandal itself. Those who are there tomorrow morning, please do come. Now is that Sandhya Arati is in progress. After Sandhya Arati, we'll have bhajans here by two of our devotees, and we welcome all of you to come, Sri Vishnu Murari Chatterjee and Sri Abhik Chatterjee. And food will be at 8 o'clock. 8:30? It will be at 8:30.
ले लेना, ठीक ऐसे ले लेगा वो। रुक जा সিধু रुक जा, একটা ঘাট তুলে দে, উঠে যাবে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। এটা বি ফ্ল্যাটের মধ্যম হচ্ছে, ডি সাবই হয়ে যাবে তো, তোর যেটা ছিল। এটা হ্যালো, চেক, ঠিক আছে সাউন্ড। এমা এটা পড়ে যাচ্ছে কেন? চেক, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আচ্ছা। ঠিক আছে, না না অনেক সে দেরি হয়ে যাবে। এটা একটু নড়ছে বাবা, একটু ঠিক করে দাও। রমেশ দিবে। ले लेगा वो, ले लेगा। चल मारो तो। আমি কালকে দেখছিলাম আপনাকে, আমি বললাম ওই মহারাজ এসছেন।
Those devotees who are standing outside, please come and occupy your seats. जो भक्त बाहर खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि आके अपना स्थान ग्रहण कीजिए. आज इस संध्या का जो समापन संध्या है भजन संध्या के रूप में, हमारे साथ दो भक्त और गायक हैं. आज पहले we have the well known to our devotees Sri Vishnu Murari ji, popularly known as Champakda, who is a trained Hindustani classical artist with over 35 years of experience. Born into a family of musicians and connoisseurs of music from near Kolkata, he got his initiation into Hindustani classical music at an early age by his elder sister, late Purabi Chattopadhyay, who was a well-known classical vocalist. Later he took training under another well-known vocal maestro, Professor Subhash Chakaldar of Rampur Gharana, and also took talim in Tala and Laya from the tabla maestro, late Ustad Shaukat Ali Khan. He teaches at the famous Sri Ram School in Gurugram and is well known for teaching music to the budding artist. He is a regular singer at our Delhi ashrama and other ashramas wherever he is invited, and he will be accompanied on tabla by Sri Siddharth Bhattacharya and on tala Sri Ramesh Dwivedi ji. On behalf of Ramakrishna Mission Gurugram, we welcome him and request him to start. আমি প্রথমে মঞ্চে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীবৃন্দকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি, আর ভক্তজন যারা আছেন তাদের আমার নমস্কার। আমার সঙ্গে মহারাজ তো বললেন সিদ্ধার্থ অনেক দিন ধরেই আমার সঙ্গে আছে, আমরা একসঙ্গেই অনেক দিন হয়ে গেছে, অনেক বছর। আর রমেশ ভাইও দিল্লি মিশনে আমাদের সঙ্গে রেগুলার থাকে, যারা দিল্লি মিশনে ভক্তরা আছেন জানা। আমি আর বেশি দেরি না করে শুরু করে দিই, একটা গুরু মন্ত্র দিয়ে শুরু করি। ধ্যান মূলম গুরুর মূর্তি, ধ্যান মূলম গুরুর মূর্তি, পূজা মূলম গুরুর পদম, মন্ত্রমূলম গুরুর বাক্যম, মন্ত্রমূলম গুরুর বাক্যম, মোক্ষমূলম গুরুর কৃপা, মোক্ষমূলম গুরুর কৃপা, নিত্যশুদ্ধম নিরাবাসম, নিত্যশুদ্ধম নিরাবাসম, নিরাকারম নিরঞ্জনম, নিত্যবোধম চিদানন্দম, নিত্যবোধম চিদানন্দম,
रामकृष्णं नमाम्यहम् रामकृष्णं नमाम्यहम् ॐ चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमो भूमि न तेजो न वायुर्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुर्न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादो न चोपस्थपायुर्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्
न मे द्वेष राग न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मात्सर भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्र न तीर्थ न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च संगतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् लूज करना, फिर उसके ऊपर करना। हाँ बस चलो ठीक।
जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण भगवान। जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण भगवान। सारे जग में गूंज रही है, सारे जग में गूंज रही है तेरी महिमा गान। राम कृष्ण भगवान, राम कृष्ण भगवान। जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण भगवान। जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण भगवान। सारे जग में गूंज रही है, सारे जग में गूंज रही है तेरी महिमा गान। राम कृष्ण भगवान, राम कृष्ण भगवान। जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण भगवान। इसी कलियुग के कलुष मिटाने, इसी कलियुग के कलुष मिटाने, जड़ जग जन को मार्ग दिखाने। इसी कलियुग के कलुष मिटाने, जड़ जग जन को मार्ग दिखाने। आए कृपा निधान, राम कृष्ण भगवान, राम कृष्ण भगवान। जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण भगवान। मार्ग दिखाकर धर्म सिखाकर, मार्ग दिखाकर धर्म सिखाकर, मार्ग दिखाकर धर्म सिखाकर। पूर्व में श्रद्धा भक्ति जगाकर, मार्ग दिखाकर धर्म सिखाकर। पूर्व में श्रद्धा भक्ति जगाकर, फैलाया प्रज्ञान। राम कृष्ण भगवान, राम कृष्ण
कृष्ण भगवान। जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण भगवान। वचनमृत का कर आस्वादन, वचनमृत का कर आस्वादन, संशय मुक्त हुआ सबका मन। वचनमृत का कर आस्वादन, संशय मुक्त हुआ सबका मन। तृप्त हो गए प्राण, राम कृष्ण भगवान, राम कृष्ण भगवान। जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण भगवान। सारे जग में गूंज रही है, सारे जग में गूंज रही है तेरी ही महिमा गान। राम कृष्ण भगवान, राम कृष्ण भगवान। जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण भगवान। जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण भगवान। कृपा करो मां शारदा मात, निसगम पाम पगर निसने दप पनि सगर निसा। कृपा करो मां शारदा मात, जगत जननी मां हे जगधात्री। जगत जननी मां हे जगधात्री, जगत जननी मां हे जगधात्री। कृपा करो मां शारदा माते, कृपा करो मां शारदा माते। जगत जननी मां हे जगधात्री, जगत जननी मां हे जगधात्री। तेरा हृदय है प्रेम का सागर, तेरा हृदय है प्रेम का सागर। भर दे मेरी छोटी सी गागर, तेरा हृदय है प्रेम का सागर। भर दे मेरी
मेरी छोटी सी गागर, प्यासा है दिल बहु जन्म से, प्यासा है दिल बहु जन्म से, कृपा करो माँ शारदा माते, कृपा करो माँ शारदा माते, कृपा करो माँ शारदा माते, जगत जननी मागे जगधात्रे, जगत जननी माँ हे जगधात्रे। आए हो तुम रूप छुपा के, राम कृष्ण सह धर्मिनी हो के, आए हो तुम रूप छुपा के, राम कृष्ण सह धर्मिनी हो के, धन्य करो माँ दर्शन देके, धन्य करो माँ दर्शन देके, कृपा करो माँ शारदा माते, कृपा करो माँ शारदा माते, कृपा करो माँ शारदा माते, जगत जननी माँ हे जगधात्रे, जगत जननी माँ हे जगधात्रे। ज्ञान रूपा तुम ज्ञान दायिनी, ज्ञान रूपा तुम ज्ञान दायिनी, भक्ति रूपा तुम भक्ति प्रदायिनी, ज्ञान रूपा तुम ज्ञान दायिनी, भक्ति रूपा तुम भक्ति प्रदायिनी, भक्तों जनों के पाप नाशिनी, भक्तों जनों के पाप नाशिनी, कृपा करो माँ शारदा माते, कृपा करो माँ शारदा माते, कृपा करो माँ शारदा माते, जगत जननी माँ हे जगधात्रे, जगत जननी माँ, जगत जननी माँ, जगत जननी माँ हे जगधात्रे। हे दयामयी शारदे माँ, हे दयामयी शारदे माँ। তবলার একটু প্রবলেম হচ্ছে, স্কেল ওইটা নেই, হ্যাঁ এটা এসে মানে তবলার স্কেল অনুযায়ী আমাকে চলতে হচ্ছে। হে দয়াময়ী शारदे माँ, हे दयामयी शारदे माँ, विषय बोध
विसारदे मां विषय बोध विसारदे मां सारदे मां हे दयामयी सारदे मां हे दयामयी मातृभाव दर्शन अभिनव भोगरत जग को दिखाने मातृभाव दर्शन अभिनव भोगरत जग को दिखाने विश्व में अवतरण है तब विश्व में अवतरण है तब दुरित हरण विसार दे मां सार दे मां हे दयामयी सार दे मां हे दयामयी विषय बोध विसार दे मां विषय बोध विसार दे मां सार दे मां हे दयामयी सार दे मां मलिन चित साधन रहित है धारणा तेरी न होवे मलिन चित साधन रहित है धारणा तेरी न होवे ज्ञान पावक में गला ज्ञान पावक में गला अनुरूप नव आकार दे मां सार दे मां हे दयामयी सार दे मां हे दयामयी मोह पंक निमग्न हूँ मैं तो कलंक निजांक मेले मोह पंक निमग्न हूँ मैं तो कलंक निजांक मेले भ्रम त्रिमिर से अंध हूँ अब दृष्टि दोष सुधार दे मां सदय होकर हृदय तम हर सदय होकर हृदय तम हर खोल अनुभव द्वार दे मां कर्म पाश विनाश कर दे कर्म पाश विनाश कर दे फिर नहीं भव भार दे मां सार दे मां हे दयामयी सार दे मां विषय बोध विसार दे मां विषय बोध विसार दे मां सार दे मां हे दयामयी सार दे मां हे दयामयी सार दे मां
श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मग्न हुए थे। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मग्न हुए थे। ध्यान में पहचाने नरेंद्र कौन थे। ध्यान में पहचाने नरेंद्र कौन थे। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मग्न हुए थे। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मग्न हुए थे। ध्यान में पहचाने नरेंद्र कौन थे। ध्यान में पहचाने नरेंद्र कौन थे। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मग्न हुए थे। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मग्न हुए थे। ध्यान में पहचाने नरेंद्र कौन थे। ध्यान में पहचाने नरेंद्र कौन थे। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मग्न हुए थे। सप्त ऋषि मंडल के ध्यान योगी ऋषिवर। सप्त ऋषि मंडल के ध्यान योगी ऋषिवर ब्रह्म सुख छोड़कर स्वयं ही आए थे। ब्रह्म सुख छोड़कर स्वयं ही आए थे। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मग्न हुए थे। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मग्न हुए थे। ध्यान में पहचाने नरेंद्र कौन थे। ध्यान में पहचाने नरेंद्र कौन थे। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मग्न हुए थे। रामचंद्र भक्तोवर महावीर जैसे 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 थे। श्री कृष्ण प्रिय सखा अर्जुन जैसे थे। श्री कृष्ण प्रिय सखा अर्जुन जैसे थे। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मग्न हुए थे। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मग्न हुए थे। ध्यान में पहचाने नरेंद्र कौन थे। ध्यान में पहचाने नरेंद्र कौन थे। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मग्न हुए थे। अखंड निराकर अद्वैत धाम से। अखंड निराकर अखंड निराकर अद्वैत धाम से। अखंड निराकर अद्वैत धाम से ज्ञान प्रेम सबको देने नरेंद्र आए थे। ज्ञान प्रेम सबको देने नरेंद्र आए थे। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मग्न हुए थे। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मग्न हुए थे। ध्यान में पहचाने नरेंद्र कौन थे। ध्यान में पहचाने नरेंद्र कौन थे। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मग्न हुए थे। स्वामी जी गाए की प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा।
तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान मेरा। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान मेरा। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। दो रोटी एक लंगोटी तेरे पास मैं पाया। दो रोटी एक लंगोटी तेरे पास मैं पाया। भक्ति भाव दे यार, भक्ति भाव दे यार, नाम तेरा गवैया। मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। तू दीवान मेहरबान, नाम तेरा मीरा। तू दीवान मेहरबान, नाम तेरा मीरा। अब की बार दे दीदार, अब की बार दे दीदार, मेहर कर फकीरा। मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान मेरा। मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। तू दीवान मेहरबान, नाम तेरा मरैया। तू दीवान मेहरबान, नाम तेरा मरैया। दास कबीर शरण आया, दास कबीर शरण आया। शरण लागे तरैया। मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम तेरा। একটা আমি লাস্ট ওই সিসা তো
Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om. मोगे लागे लगन हरि दर्शन की आ मोगे लागे लगन हरि दर्शन की मोगे लागे लगन हरि दर्शन की मोगे लागे लगन हरि दर्शन की हरि ओम हरि ओम हरि ओम Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om. मोगे लागे लगन हरि दर्शन की मोगे लागे लगन हरि दर्शन की विश्वविदाता मंगलदाता विश्वविदाता मंगलदाता विनय सुनो अब दीनन की मोगे लागे लगन हरि दर्शन की मोगे लागे लगन हरि दर्शन की हरि ओम 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 हे सुखकारी जगहितकारी 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 दो शक्ति भव तरनन की दो शक्ति भव तरनन की मोगे लागे लगन हरि दर्शन की मोगे लागे लगन हरि दर्शन की मोगे लागे लगन हरि दर्शन की हरि ओम 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 हरि ओम
सरबस ले लो, सरबस ले लो, दर्शन दे दो, ने सा सा, ने सा सा ने रा पा मा बनी मा बनी सा सा ने रा पा दा सरबस ले लो, दर्शन दे दो, सरबस ले लो, दर्शन दे दो, सरबस ले लो, दर्शन दे दो, बलि ले लो इसी जीवन के, बलि ले लो इसी जीवन की, आया शरण में, आया शरण में, शरण में आया आया शरण आया शरण में, आया शरण में, आया शरण में, आसिए मन में, आया शरण में, आसिए मन में, चरण कमल सब अर्पण की, मोगे लागे लगन हरे, दर्शन की मोगे लागे लगन हरे, दर्शन की मोगे लागे लगन हरे, दर्शन की। हरि ओम 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 हरि
We convey our profuse thanks to Sri Vishnu Murari Chatterjee, popularly known as Champakda, for his soulful singing of bhajans. We also thank Sri Siddharth Bhattacharya on tabla and Ramesh Dvediji on kanjari. Champakda, एक minute. We are just waiting for Swami Shantatmanji Maharaj. अभी तुम चले एसो। On behalf of Ramakrishna Mission, Gurugram, on behalf of everyone present here, we profusely thank both the artists. First to Sri Vishnu Murari ji or Champakda. Swami Shantatmanji is honoring him. And to Abhik Chatterjee also. To Siddharth Bhattacharya on tabla. Before Avik Chatterjee begins, a small introduction about him. Avik Chatterjee is a classical vocalist born in Kolkata. He got his music training under Guru Pandit Dinanath Mishra and pursued his graduation as well as masters in music from Rabindra Bharati Music University, Kolkata. He also received national scholarship from the Ministry of Culture, Government of India in the year 2008 and has performed in various prestigious platforms like in Rashtrapati Bhavan, National School of Drama, and in the year 2020 he performed at the Rajpath on the occasion of Republic Day. So he has performed in many prestigious stages in Delhi, NCR, and is currently working as a music lecturer in Vinayanagar Bengali Senior Secondary School. His area of specialization are classical music, light classical, khayal, bhajan, folk songs, and so on. He also regularly sings at Ramakrishna Mission, New Delhi, and is known to all the devotees and monks. On behalf of everyone, we welcome him and thank him for agreeing to sing.
উপস্থিত সব মহারাজদের প্রণাম জানাই, উপস্থিত সমস্ত ভক্তবৃন্দদের প্রণাম জানিয়ে আমি আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি। ভুল ত্রুটি মার্জনা করবেন। প্রথম গানটি কীর্তনাঙ্গ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়ের রচনায় স্বামীজি ঠাকুরকে শোনাতেন। কিবা অনুপম ভাতে মোহন মূরতে, অনুপম ভাতে মোহন মূরতে, ভকত হৃদয় রঞ্জন, চিন্তায় মম মানস হরি, চিদ ঘন নিরঞ্জন, চিন্তায় মম মানস হরি, চিদ ঘন নিরঞ্জন। কিবা অনুপম ভাতে মোহন মূরতে, অনুপম ভাতে মোহন মূরতে, ভকত হৃদয় রঞ্জন, চিন্তায় মম মানস হরি, চিদ ঘন নিরঞ্জন। নবরাগে রঞ্জিত কোটি শশে বিনিন্দিত, নবরাগে রঞ্জিত কোটি শশে বিনিন্দিত, কিবা বিজলি চমকে সেরূপ আলোকে, বিজলি চমকে সেরূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন, চিন্তায় মম মানস হরি, চিদ ঘন নিরঞ্জন। কিবা অনুপম ভাতে মোহন মূরতে, অনুপম ভাতে মোহন মূরতে, ভকত হৃদয় রঞ্জন, চিন্তায় মম মানস হরি, চিদ ঘন নিরঞ্জন। হৃদি কমলাসনে ভাবতার শ্রীচরণ, হৃদি কমলাসনে ভাবতার শ্রীচরণ, দেখো শান্ত মনে প্রেম নয়নে, শান্ত মনে প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয় দর্শন, চিন্তায় মম মানস হরি, চিদ ঘন নিরঞ্জন।
কিবা অনুপম ভাতি মোহন মূরতি অনুপম ভাতি মোহন মূরতি ভকত হৃদয় রঞ্জন চিন্তয় মম মানস হরি চিদ ঘন নিরঞ্জন। চিদানন্দ রসে চিদানন্দ রসে ভক্তি যোগাবেশে হরে চির মগন। চিদানন্দ রসে চিদানন্দ রসে ভক্তি যোগাবেশে হরে চির মগন। চিন্তয় মম মানস হরি চিদ ঘন নিরঞ্জন। কিবা অনুপম ভাতি মোহন মূরতি অনুপম ভাতি মোহন মূরতি ভকত হৃদয় রঞ্জন। চিন্তয় মম মানস হরি চিদ ঘন নিরঞ্জন। চিন্তয় মম মানস হরি চিদ ঘন নিরঞ্জন। রাগ মালকোষের উপর আধারিত। মা 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 शारदा देवी विराजे शारदा देवी विराजे भुवन पावन नयन मोहन भुवन पावन नयन मोहन रूप निरूपम राजे रूप निरूपम राजे शारदा देवी विराजे भुवन पावन नयन मोहन भुवन पावन नयन मोहन रूप निरूपम राजे रूप निरूपम राजे शारदा देवी विराजे
सेना युक्त करतल सुख सेना युक्त करतल श्वेत वसन विमुक्त कुंतल सुख सेना युक्त करतल श्वेत वसन विमुक्त कुंतल मुख कमल लखि ध्यान मंगल मुख कमल लखि ध्यान मंगल कोटि मन सिज लाजे कोटि मन सिज लाजे शारदा देवी विराजे शारदा देवी विराजे भुवन पावन नयन मोहन भुवन पावन नयन मोहन रूप निरूपम राजे रूप निरूपम राजे शारदा देवी विराजे शारदा देवी विराजे पूरित करुणलोचन प्रेम पूरित करुणलोचन करत सब दुख ताप मोचन प्रेम पूरित करुणलोचन करत सब दुख ताप मोचन कटत भव भय मिटत संशय कटत भव भय मिटत संशय मोह माया भाजे जय जननी जय जननी कलरव जय जननी जय जननी कलरव गात जग जन वंदना तव जय जननी जय जननी कलरव गात जग जन वंदना तव उठत चित में दिव्यानुभव उठत चित में दिव्यानुभव हृदय वीणा बाजे हृदय वीणा बाजे शारदा देवी विराजे भुवन पावन नयन मोहन भुवन पावन नयन मोहन रूप निरूपम राजे रूप निरूपम राजे शारदा देवी विराजे शारदा देवी विराजे शारदा देवी विराजे। ধন্যবাদ।
1886 খ্রিস্টাব্দের 19শে জানুয়ারি কাশীপুর উদ্যানবাটিতে ঠাকুরকে স্বামীজি এই গানটি শুনিয়েছিলেন। কবিরজির কম্পোজিশন। मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान मेरा। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान मेरा। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। दो रोटी एक लंगोटी तेरे पास मैं पाया। दो रोटी एक लंगोटी तेरे पास मैं पाया। भक्ति भाव दे और भक्ति भाव दे और नाम तेरा गावा। दो रोटी एक लंगोटी तेरे पास मैं पाया। दो रोटी एक लंगोटी तेरे पास मैं पाया। भक्ति भाव दे और भक्ति भाव दे और नाम तेरा गावा। मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। तू देवान मेहरबान नाम तेरा बरया। तू देवान मेहरबान नाम तेरा
दास कबीर शरण में आए, चरण लगे तरैया। तू दीवान मेहरबान, नाम तेरा बरेया। तू दीवान मेहरबान, नाम तेरा बरेया। दास कबीर शरण में आए, दास कबीर शरण में आए, चरण लगे तरैया। मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान मेरा। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। ধন্যবাদ। এই গানটিও ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়ের রচনা। কোলে করে আছো মোরে, কোলে করে আছো মোরে, দিবস রজনী। অন্তর জামিনী, অন্তরে জাগেছ গো মা, অন্তর জামিনী। কোলে করে আছো মোরে, কোলে করে আছো মোরে, দিবস রজনী। অন্তর জামিনী, অন্তরে জাগেছ গো মা, অন্তর জামিনী। অধম সুতের প্রতি কেন এত স্নেহ প্রীতি। অধম সুতের প্রতি কেন এত স্নেহ প্রীতি। প্রেমে আহা একেবারে, প্রেমে আহা একেবারে, যেন পাগলিনী। অধম সুতের প্রতি কেন এত স্নেহ প্রীতি। অধম সুতের প্রতি কেন এত স্নেহ প্রীতি। প্রেমে আহা একেবারে, প্রেমে আহা একেবারে, যেন পাগল।
আদর করি কখনো সবলে ধরে পিয়া অমৃত সোনা মধুর কাহিনী নিরবধি অবিচারে কত ভালো বাসো মোরে নিরবধি অবিচারে কত ভালো বাসো মোরে উদ্ধারিছ বারে বারে উদ্ধারিছ বারে বারে পতিত ধারিণী বুঝেছি এবারো সারো মারো আমি মারো চলিব সুপথে সদা শুনি তব বাণী অন্তর জামিনী করি মাত্রে স্তন্যপান হব বীর বলবান করি মাত্রে স্তন্যপান হব বীর বলবান আনন্দে গাহিব জয় আনন্দে গাহিব জয় ব্রহ্ম সনাতনী করি মাত্রে স্তন্যপান হব বীর বলবান করি মাত্রে স্তন্যপান হব বীর বলবান আনন্দে গাহিব জয় আনন্দে গাহিব জয় ব্রহ্ম সনাতনী অন্তর জামিনী অন্তরে জাগিছ গো মা অন্তর জামিনী কোলে করে আছো মোরে কোলে করে আছো মোরে দিবস জামিনী অন্তর জামিনী অন্তরে জাগিছ গো মা অন্তরে জাগিছ গো মা অন্তরে জাগিছ গো মা অন্তর জামিনী
तुझसे हमने दिल को लगाया, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको मैं अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया। सबके मकान दिल का मकीन तू, सबके मकान दिल का मकीन तू, कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू, सबके मकान दिल का मकीन तू, कौन सा दिल है जिसमें नहीं तो, हर एक दिल में है तू समाया, हर एक दिल में है तू समाया, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया। क्या मलायक क्या इंसान, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या मलायक क्या इंसान, क्या हिंदू क्या मुसलमान, जैसे चाहा तूने बनाया, जैसे चाहा तूने बनाया, जो कुछ है सो तू ही है, काबा में क्या और देवल में क्या, तेरी परस्ती शाह होगी सब जा, काबा में क्या और देवल में क्या, तेरी परस्ती शाह होगी सब जा, सबने तुझको सर है झुकाया, सबने तुझको सर है झुकाया, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया।
अर्श से लेकर फर्श जमीन तक और जमीन से अर्श वरी तक, जहाँ मैं देखा तू ही नजर आया, जहाँ मैं देखा तू ही नजर आया। जो कुछ है सो तू ही है, सोचा समझा देखा भाला, सोचा समझा देखा भाला। तू जैसा ना कोई ढूंढ निकाला, सोचा समझा देखा भाला। तू जैसा ना कोई ढूंढ निकाला। अब ये समझ में ज़फ़र को आया, अब ये समझ में ज़फ़र को आया। जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया, तुझसे हमने दिल को लगाया। जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया, तुझसे हमने दिल को लगाया। চিদানন্দ সিন্ধু নীরে প্রেমানন্দের লহরে মহাভাব রসলীলা, মহাভাব রসলীলা। কি মাধুরী মোরে মোরে চিদানন্দ সিন্ধু নীরে প্রেমানন্দের লহরে। মহাযোগে সব একাকার হইল, দেশকাল ব্যবধান সব ঘুচিল রে। মহাযোগে সব একাকার হইল, দেশকাল ব্যবধান সব ঘুচিল রে। এখন আনন্দে মাতিয়া দুবাহু, এখন আনন্দে মাতিয়া দুবাহু। তুলিয়া বলো রে মন হরি হরি। মহাযোগে সব একাকার হইল, দেশকাল ব্যবধান সব ঘুচিল রে। মহাযোগে সব একাকার হইল, দেশকাল ব্যবধান সব ঘুচিল রে। এখন আনন্দে মাতিয়া দুবাহু,
এখন আনন্দে মাতিয়া দুবাহু তুলিয়া বলো রে মন হরে হরে চিদানন্দ সিন্ধু নীরে প্রেমানন্দের লহরে চিদানন্দ সিন্ধু নীরে প্রেমানন্দের লহরে মহাভাব রসলীলা মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মোরে মোরে চিদানন্দ সিন্ধু নীরে প্রেমানন্দের লহরে চিদানন্দ সিন্ধু নীরে প্রেমানন্দের লহরে। মা মা শ্যামা নামের লাগলো আগুন আমার দেহ ধূপ কাঠিতে শ্যামা নামের লাগলো আগুন আমার দেহ ধূপ কাঠিতে যত জালি সুবাস তত যত জালি সুবাস তত ছড়িয়ে পড়ে চারিভিতে মা শ্যামা নামের লাগলো আগুন আমার দেহ ধূপ কাঠিতে ভক্তি আমার ধূমের মতো ভক্তি আমার ধূমের মতো ঊর্ধ্বে ওঠে অবিরত ভক্তি আমার ধূমের মতো ঊর্ধ্বে ওঠে অবিরত শিবলোকে দেব দেউলে শিবলোকে দেব দেউলে মার শ্রীচরণ পরশিতে পরশিতে
মা মা শিবলোকের দেব দেউলে শিবলোকের দেব দেউলে মার শ্রীচরণ পড়শিতে পড়শিতে মা শ্যামা নামের লাগলো আগুন আমার দেহে ধূপ কাঠিতে অন্তরলো শুদ্ধ হলো পবিত্র সে ধূপ সুবাসে অন্তরলো শুদ্ধ হলো পবিত্র সে ধূপ সুবাসে ওরে মার হাসিমো চিত্তে ভাসে মার হাসিমো চিত্তে ভাসে চন্দ্র সম নীলাকাশে সব কিছু মোর পুড়ে কবে মা 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 সব কিছু মোর পুড়ে কবে চিরতরে ভস্ম হবে মার ললাটে আঁকব তিলক মার ললাটে আঁকব তিলক সেই ভস্মে বিভূতিতে বিভূতিতে মা শ্যামা নামের লাগলো আগুন আমার দেহে ধূপ কাঠিতে যতই জ্বালি সুবাস তত যতই জ্বালি সুবাস তত ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে মা শ্যামা নামের লাগলো আগুন আমার দেহে ধূপ কাঠিতে শ্যামা নামের লাগলো আগুন আমার দেহে ধূপ কাঠিতে মা মা ओम यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे सिताहिया सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्. Avik is a recent addition. Last 2-3 years he is coming regularly to the ashrama for all our functions. We really devotees like his sweet voice and his rendition with lot of devotion. So we thank Avik and our Siddharth Bhattacharya who has been playing in the ashrama for a number of years now, and we have also got another person to assist. So we thank all of them heartily
Finally, we thank all the monks who came and made this function a grand success. It was all the presence of the monks that made such a huge difference to the whole function. Of course, devotees are always part of all our functions. They came in large numbers. We thank all of them. With that, with this program, the whole function virtually comes to a conclusion. Now, of course, sadhus and devotees can go for prasad. Let us finish with the Jai to the trio. Jai Shri Guru Maharaj ki Jai, Jai Mahamai ki Jai, Jai Swamiji Maharaj